हाँ हाँ, जैसा जैसा नया नया आएगा। तो फिर मेरा छोटा आएगा ना स्क्रीन? हाँ वैसे ही आता है। तो वी आर लाइव। ओके, वी आर लाइव, श्योर। Oh wow, okay. Hi, hello. Can you guys see me? If you can, just drop a hi or a yes in the comments so that I know. I'm operating with a different setup. As you can see today, I am not at home. I am in Bengaluru for my last shows of the year. So Jamie somehow put this meeting together, and I need some confirmation from you guys in the comments. जो मैं स्क्रीन शेयरिंग पर देख रहा हूँ, इस लॉन्ग स्टोरी। अने इज हियर सेइंग गुरु जी को सादर प्रणाम प्रणाम प्रणाम। फायर आइडल इज आल्सो हियर। लेट तो भी क्या ही है। एक होता है काल, एक होता है महाकाल, विच इज बियॉन्ड टाइम। तो भी इसमें क्या यूट्यूब लाइव का लेट ना लेट एक ही बात है। महाराष्ट्र में क्या लिखा है? भांडे, अरे अरे अरे, काफी हार्डकोर लोग आया है। अने भांडे। If you can see me or hear me, just drop a hi. And also, as you guys know the drill, CFBR is uh, for good karma. So today it's gonna be Dank memes apparently. Dank meme का भंडार कम ही नहीं होता है। तो I think I'm a little too old for this, but then they also represent pop culture or the lack thereof. So we shall do it in a quick while I just see who all are here. Uh, while you are here, do like the stream so that we can reach more people. Last time it was Kautuk and I, and I think it has reached the right kind of people. Got good feedback for it. Kautuk and I, as opposed to Siddhi and I, we do plan to do a regular series. But discipline बहुत मुश्किल है आर्टिस्ट लोग के लिए, because we exited all the systems. I don't even give an alarm anytime except if there's a flight to catch. तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पर करेंगे. The series we have in mind is called Thought Bubble, and I think whatever series we do, the end result will be the same. It'll just be two privileged Brahmin boys talking about thinking, but it's fun. Intellectual masturbation, like I say myself. Okay, I don't think I can see the screen beyond the point. If you guys are still with me, I'll just check if I can. कौन कौन आ चुका है? डिस्कॉर्ड यार पता नहीं कितना क्या क्या करेगा. Apparently I am on Reddit also. तो रेडिट भी करना है, डिस्कॉर्ड भी करना है, टेलीग्राम करना है. मेहता was telling me, आकाश मेहता, कि he is also on टेलीग्राम now. वो वहां पर भी कुछ कुछ करता है, एंगेजमेंट एक्टिविटीज. I think we are fully employed actually. We might say we are free and we are artists, but actually we are working for the social media platforms. क्या करें, और नहीं करेंगे तो लोग आएंगे नहीं. वैसे इस वीकेंड इज द लास्ट वीकेंड आई एम परफॉर्मिंग दिस ईयर एटलीस्ट. इस बार हम 31st को नहीं करेंगे. करते हैं हर बार, लोग आ भी जाते हैं, बट 31st का बहुत रैंडम क्राउड आता है, who couldn't get passes anywhere else. And then I don't know what they expect from a stand-up show on New Year's Day. I'm not sure if I can see the comments properly. Do type in a few just so that I can see the screen is live. CFBR, if nothing else. And like I was saying, our show's in Bangalore this weekend. So if you are in the city or if you have friends here, tell them about it. I'm doing 3 different shows, Friday, Saturday, and Sunday. I'm doing one trial also. That's also tomorrow in Indira Nagar. It's new jokes. So मैंने कल एक बार किया मुंबई में, but it needs a lot of work. So, but that's how you start. Every time you start a new show, it's like
You're starting from scratch again, almost. I mean, you have the skills, obviously, but jokes take time. That makes you appreciate your older material all over again. But it's gonna be a fun show. It has a place called Yuck Comedy Club. No, if you let comics name things, this is what happens. Uh, कल इंदिरा नगर है, सैटरडे को है वाइट फील्ड में, where I'll be doing No Country for Moderation for the last time in Bangalore and maybe in general also. I'm not sure. And Sunday ko I'm doing Notes from the Bunker at Hyatt, the great venue at MG Road in Bangalore. As you can see, I'm always on a budget trip because Kanti is expensive. And we're just waiting for Jamie to join us so we can start with our collection for today. I now know what a radio jockey feels like. Like I have no clue what is going on at the other end, and I'm just going on talking, hoping that people are listening. It's a difficult job, radio jockeys. They're annoying in general, but still a difficult fucking job. I hardly know anyone in radio who does not want to leave. I know a few who are very happy, but it's just that the timings and the shifts and also the regularity. Are talking about discipline. So RJ, you have to be fucking disciplined. You have to be there all, and not all the episodes are recorded live, but even so, just most shows are like daily or 2-3 times at least a week, and you need to be there in the studio to do it. And there are all other activities. No, again, engagement activities. These are old-fashioned engagement activities where you go to malls and schools and community centers, and act like all of this matters. Also, what I learned is that if you're a morning RJ, life is much more difficult. Obviously, you have to wake up on time and all of that, but the body hasn't warmed up right in the morning. But he still has to sound like he's in a football World Cup all the time. They have to really strain themselves and the vocal cords to sound that high in the morning, and it leads to problems of the vocal cords. It's called vocal polyps, and I'm sure they do their like gargling or whatever it is that you got to do, but it's a tough one because you cannot talk like this. Guruji can talk like this because he's not reaching out to mass audience. But if you're random listeners without the screen, just audio listeners, and that too going around in daily activities like driving, cooking, cleaning, pissing, उसमें आपको उसका attention लेना है तो you have to be loud. In fact, I feel you need to be loud for anything in this country. Otherwise, कोई सुनता ही नहीं है. Okay, I'll just check once again what's going on. Okay, few more people are joined in. Ravi Gupta is said CFBR. Yes, thank you very much. Subhash Perry is saying come to Hyderabad one more time. Okay, आएंगे बट अभी कुछ ज्यादा हो गया. 3 हैदराबाद शो किया हमने लास्ट मंथ में, तो अभी थोड़ा गैप रखना पड़ेगा. साहिल होने को लेके आओ. हाँ, कर सकते हैं. इंदिरा नगर बेवड़ा क्राउड, यस, कल तो होने वाला है, वो तो है ही. But it's actually they need to be the right amount of drunk, little bit burst is great. It just adds more energy to the show. But if that's lost, then you lost control. Then they're trying to be funny without even knowing it. So yeah, we've done a lot of bar gigs over the years. Now we know the drill. It helps, no, because in a bar gig you have to earn people's attention. You're competing with so many other things. But in an amphitheater, in a theater, in a studio, they're already there and you got their full attention. So then you tend to take it for granted, which you shouldn't at any time, because increasingly now, with everybody stuck to their phones with an umbilical cord, you never have their attention. Even though they're staring right at you, उसके दिमाग में कोई रील चल रहा होगा. चलो काफी बकचोदी हो गया, शुरू करते हैं आज का सत्संग. जेमी, आर यू देयर? Yes. All right. जरा बताओ क्या चल रहा है चैट में. I'm like Dhritarashtra. You have to be my Sanjay today.
मैं डिस्क्रिप्शन में आपका जूम शो का लिंक डाल रहा हूँ दैट। Oh, yeah, there's Zoom show also. Last Zoom show of the year, and also last Zoom show of no country for moderation. I think the early birds are gone already. A lot of people have been wanting to attend that show either in India or abroad, and for some reason they're not been able to make it. This is the last time I'll be doing it. I still enjoy doing the show, but at one point you have to move on, no, in life. So लास्ट बार करेंगे, संडे को कर रहे हैं, 25 दिसंबर क्रिसमस डे दोपहर को कर रहे हैं, so that people from India can join, people from US can join, and hopefully people from Europe will also join. So that is the idea. Mostly Zoom shows we getting NRIs to come now, because Indian people will largely they come for the live show. They hope to come for a live show someday. Now, when all the stars align and you get your babysitter and you don't get acidity that day, then you will come. So there's such a funnel of everybody who knows you and your work, and they like it, to people who follow it very closely, to people who actually come for the show. The drop off is very steep, but that is true for all products, no? In marketing, they have a funnel that even Jimmy will tell you about, because he is also a marketing person. क्या बोलते हैं उसको, अवेयरनेस, ट्रायल, एक्विजिशन, यूसेज, हाँ, AA RRR बोलते हैं उसको बेसिकली। AA RRR, व्हाट इज द फुल फॉर्म? तो इट जस्ट मींस कि मतलब उसका हर एक का इंडिविजुअल वर्ड है। तो एक्विजिशन आता है, पहले आता है अवेयरनेस, फिर तो मतलब वो अभी हाउ डू यू डिफाइन इट वैसा है। तो पहले एक्विजिशन मतलब पहले आप एक्वायर करोगे, देन यू एक्टिवेट द यूजर बेसिकली। मतलब तो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ फेसबुक, राइट? फेसबुक पे कैसा है कि यूजर को आप किधर इंस्टाग्राम से फेसबुक ला दिए, दैट इज एक्विजिशन, ठीक है। एक्टिवेशन इज बेसिकली फेसबुक में किसी ने आपको मतलब यू हैव सेंट, यू हैव नाउ 4 फ्रेंड्स ऑन फेसबुक, दैट इज एक्टिवेशन। अच्छा, फिर आता है रिटेंशन। रिटेंशन बेसिकली मींस कि आप यूजर रिटेन कर रहे हो, मतलब यू आर देयर ऑन द ऐप फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। फिर आता है रेफरल, कि मतलब आपने अपने दोस्त को बुला के आ जा, ये देख कितना ऐप ऐसा, लाइक दैट इज रेफरल। एंड उसके बाद आता है रेवेन्यू। द लास्ट थिंग इज बेसिकली रेवेन्यू। रेवेन्यू, अच्छा रेवेन्यू लास्ट में आता है। अरे तब तक अभी भूखा मर रहा है। So last stage is championship, where people not only use your product, they recommend it to their friends and family. Unfortunately, people who like my work don't seem to have friends. So because the friends are getting drunk in Indira Nagar. तो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। आज का कितना लोग है चैट में? आज अपने इधर है 50 लोग। क्या बात है, नो नॉट बैड। तो और लाइक किया सब लोग, नहीं किया तो कर लो। एंड वी शैल बिगिन आवर सेशन ऑफ टुडे। दिस इज Dank memes brought to you by Jamie. Let's go, let's see the first one. We'll also do a Q&A if there's time left. I have a show to go to in Bangalore around 10. So stick around for the Q&A. We'll wrap up at 10 o'clock today. अच्छा हाँ, आपका वो है। नमित को पूछ के रखता, चप्पल पहन के आएगा तो चलेगा क्या उसका क्लब में? चलेगा, पास में ये इसलिए नहीं, पर वो इस सब फकिंग क्लब नो। या ठीक है, एक सेकंड। Can you see it? Yes. I'm assuming ये Shark Tank का भी. So sharks, we are here to sell India. Great. The daddy really adds to it. Also, how they have cropped Adani और अंबानी। Yeah, बहुत गंदा किया, but that's the fun of it. क्या लिखा अपन कैप्शन में? मोदी जी है तो मुमकिन है। Of course, of course, of course. मोटा भाई इन पिंक टी शर्ट, क्या मस्त लग रहा है।
Sharks तो definitely है ये लोग. यार ये is it a fun program? I never felt like watching it. Just felt like too yuppie. अरे मेरे को भी ऐसा बहुत क्रिंज लगने लग गया था, मतलब क्या, बेचना है बेचो, बट सामूहिक मत बेचो ना, मतलब कोई मीटिंग लो एक ऐसा कॉन्फ्रेंस रूम में. हाँ, तो अभी एंटरटेनमेंट भी कंटेंट भी बनाने का क्या करेंगे. वो अश्नील ग्रोवर की जो भी नाम है उसका, वो क्या अभी वो जेल में कि बाहर है, कुछ केस है ना उसके ऊपर बड़ा वाला. नहीं, पता नहीं, वो मैं तो लास्ट देखा था, पिक्चर्स का ऐड कर रहा था वो टीवीएफ का. पिक्चर्स का लाइक ही वाज डूइंग एडवर्टाइजमेंट लाइक इन्फ्लुएंसर. या हाँ, उसका तो बनता है यार पिक्चर्स पे, बात तो सही है. तो मतलब वो ऐड 1 मिनट का है, उसी का 10 मिलियन व्यूज आ गया है इसकी. 10 मिलियन ऐसा क्या बोलता है वो उसमें. कुछ नहीं, ही जस्ट से द शिटी राइम कि अरे मैं आ गया तो मुमकिन है, एंड ही जस्ट राइम सम शिट विद खराब गंदा. That's what we need a shitty line. We are doing good lines is our problem. ठीक है, next let's see it. अरे अरे अरे, अभी तो we can't even say too soon because it's been enough time. uh, it's I never get it. Like Japanese culture is, I mean, again, culture. Maybe you can tell us, Jamie, with your extensive knowledge of anime, कि ये लोग ऐसा चुतिया क्यों करते हैं. तो लास्ट टाइम व्हेन वी आर डिस्कसिंग कौतुक का हाँ पोज, कैन यू हाँ. लुक एट दिस गर्ल नाउ, उसका हम्म. पोज देखोगे, इट्स द सेम पोज. या अभी वो आया था ना एक वीडियो, रेंटिंग अ गर्लफ्रेंड इन जापान. लाइक यस. हाँ, कोई इंडियन लड़के ने बनाया वीलॉग उसका. तो आई गेस इट जस्ट गिव्स यू द फुल गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस विदाउट द बिकॉज दैट इज अ डिफरेंट इंडस्ट्री. अरे उसमें ऐसा है कि आप ऐसा, बंदी ने हाथ छू लिया, इट्स लाइक मतलब वो क्रेजी हो गया, मतलब वो रेंटल गर्लफ्रेंड ने आपका हाथ छू लिया तो. अच्छा, वो नहीं करना होता है. नहीं नहीं नहीं, इफ शी डज दैट व्हिच मींस कि आपका पैसा वसूल है, ऐसा, दैट्स द इक्विवेलेंट ऑफ दैट. अच्छा, यूजुअली दे डोंट. So if they do that, mean they actually like you not as a client but as a person. दैट डजंट मीन एनीथिंग, मतलब उसका कुछ इन्फ्लुएंस नहीं है, इट जस्ट मींस कि वहां पे के कल्चर में ऐसा है कि आपने हाथ नहीं पैसा लगाने दिया. का. हाँ, तो अभी ऐसा सब चलता है. ऑल्सो देयर अ ग्रेट एनिमे कॉल्ड रेंट अ गर्लफ्रेंड व्हिच इज बेस्ड ऑन द सिमिलर कॉन्सेप्ट. एनीमे भी है इसका. हाँ. तो दो उसमें क्या हर सीजन है. एपिसोड में क्या होता है, हर एपिसोड में नया नया क्लाइंट आता है हर एपिसोड में. नहीं नहीं, बस एक बंदा रहता है, उसको वो रेंटल गर्लफ्रेंड पसंद आ जाती है, दैट्स द होल ओके, प्लॉट. दैट्स द होल प्लॉट एंड शी कीप्स हाँ. रेंटिंग हरसेल्फ आउट बट दिस गाय इज यस इन लव विद. यस यस. और वो बोलता है कि नहीं नहीं ये सब छोड़ दे, टीसीएस में काम कर मेरे साथ ऐसा. सिमिलर It's सिमिलर. a it's a very weird place. I have a friend who works there, and I'm told that वहाँ पे is rude to talk in the metro. So if you see them in the metro, they're all sitting quietly, like doing their own thing, their phone, obviously. But if you talk to anybody in the metro, it's considered rude. You can't talk in the lift also, so it becomes even more awkward in the lift. You can't talk while eating also. But that weird. Uh, of course, ये सब samurai warrior और ये सब बात है historically. But Japan that way has been very blessed geographically because it's an island completely. So it was difficult to invade it. And as history goes, numerous times China tried to invade, but every time some storm would happen and the ships would capsize. Then with the Industrial Revolution, it suddenly became a big powerhouse, and this is 200 some years ago. And then they, like all big countries or emerging economies, they also had aspirations, for world domination, and their aspirations clashed with the West, and that's how the World War happened. Uh, but yeah, maybe maybe it is the bomb.
All right, next. Butts. Okay, Venom is saying पेट से गुड़गुड़ की आवाज आने का क्या मतलब होता है? बच्चा हुक्का पी Oh, that's a good one. यार हुक्का कल्चर बहुत I know we are using the culture the word culture very usually, but हुक्का काफी बढ़ गया है ना नहीं इंडिया में भी पब्लिक घर महाराष्ट्र पे में तो रखते बैन कर दिया था, तो यू नो राइट। हाँ तो अभी वापस किसे दिख रहा है सब जगह पे हाँ मतलब वो चलते रहता है, मेरे इधर भी चलते रहता है। there are shops there are these so called smoke shops now जिसमें ये सब इसका एक्सेसरी मिलता है ना इसका हुक्का का हाँ आसपास का नहीं अरे आपका वो एक हुक्का का जोक याद आ रहा हाँ है यार उसे एक कुछ तो है उसके अंदर सिगरेट सिगरेट का भी है एक उसका भी नशा अलग है लेकिन ये इसका अलग आई थिंक अलग इट पसंद। हाँ अलग ट्रिप है इट डज समथिंग टू योर एंटायर बॉडी आई थिंक ऐसा आपको पता है ऐसा टीयर 2 कल्चर में हुक्का मतलब सो ये मैं बता रहा हूँ कि टीयर 2 में क्या होता है कि a girl and a guy go out on a date for a हाँ hookah in a hookah club, ठीक है। ओके ओके अभी नाउ टू इम्प्रेस द गर्ल, लड़का क्या करता है, हुक्का निकालता है एंड ही मेक्स रिंग्स आउट ऑफ इट, और बंदी उस पे पागल की, ओ माय गॉड ये रिंग मेरे हाथ में पहना दे एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ बोलती Oh fuck, we are still monkeys only. But by tier 2 culture you mean दहीसर right? वो भी तो tier 2 में ही आता है और है। even हाँ थाने थाने for that matter. थाने स्टिल, अच्छा थाने भी मान सकते हैं, सम एरियाज ऑफ थाने। वैसे ये इंसिडेंट जो बोल रहा हूँ ये थाने में ही हुआ था तो There you go. ये रिंग मेरे हाथ में पहना थे काफी काफी मेटा है ना इट्स लाइक they are modern artists ना they're joking about death without knowing it क्या चल रहा है कमेंट सेक्शन में लोग CFBR डाल रहे कि नहीं डाल दे अपना पब्लिक। समवन इज ओके आस्किंग कि अपने इंडिया में कब आएगा रेंटल गर्लफ्रेंड का कॉन्सेप्ट। अभी भी है ना थोड़ा अभी इनफॉर्मल है ना अभी गर्लफ्रेंड क्या बोलती है कि मेरा रिचार्ज करवा दे दैट इज रेंट गर्लफ्रेंड there is also owl cafes in Japan and cat cafes in Japan where you just pay an amount and you go there and you can like pet the animals, which is so exploitative, no? At ऑल्सो least puts कैट कैफे तो ऐसा लो लेवल है, आपको मेन कल्चर के बारे में नहीं पता। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ मेड कैफे। maid cafe. या तो Okay. मतलब वहाँ पे सब बंदियां ऐसा मेड का कॉस्प्ले करके सर्व करती है, और सबको ऐसा मास्टर ऐसा बुला के, मास्टर आप क्या लेंगे, मास्टर आपके लिए हम ऐसा कर दे, मास्टर ऐसा ऑल ऑफ दिस शिट गोस ऑन। अभी क्या खाना वाना सब सेम होता है नॉर्मल होता है बस सिर्फ हाँ द वे दे हाँ एड्रेस यू इज डिफरेंट हाँ। ऑल्सो मतलब वो ऐसा एक जापानीज डिश है, इट्स कॉल्ड ओमू राइस, विच इज राइस रैप्ड अप इन एन ऑमलेट, ठीक है। तो ओके व्हाट दैट कल्चर डिक्टेट्स इज कि वो राइस पे आप कुछ ऐसा सॉस से लिख दो ऐसा कि टेक केयर बेटा एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ, कि टेक केयर बेटा ऑल ऑफ दिस स्टफ, अगर मम्मी डाल रही है तो। ठीक हाँ तो अभी वो कैफे में ऐसा है कि वो मेड उसके ऊपर ऐसा उसके सामने बंदे के सामने ऐसा लव लिख रही है एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ गो ऑन वहाँ पे ऐसा। so is this master in like a Victorian lord kind of a sense or is it master in like a BDSM kind of a sense आई मीन लड़के लोग के लिए तो वही इम्प्लीकेशन है कि अरे बीडीएसएम वाला। oh man this is so funny yet it's so sad also maid cafe यस। oh, and okay wow see how educational our streams are becoming like last stream में Jamie gave us निश्चय और निश्चय काफी ट्रेंड कर रहा था कमेंट्स में for those of you who are not aware निश्चय is नीचे for people from Thane
So, all right, next. Oh no, भाई इंट्रोवर्ट तो फुटपाथ पे सोए हुए लोगों को क्या लिखा है? फुटपाथ पे सोए लोगों को हटने नहीं बोल पाया। Yes, this is the best defense I've seen yet. भाई इंट्रोवर्ट, यू थिंक सच में लोग इंट्रोवर्ट है कि ऐसे ही दे हियर इट एंड लाइक हाँ अच्छा तुम भी वही चाहिए वही वही? ये वो वाला कॉन्सेप्ट है ना कि मतलब एक पीपल वांट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, और किसी ने बस एक इंट्रोवर्ट बोल के बोल दिया कि अरे हम तो इंट्रोवर्ट है, तो सब वो कम्युनिटी में घुस गए। हाँ राइट। घुस गया ऐसे ही, उनको हाँ। पता भी नहीं, वो लोग सिर्फ रिंग बना रहा है हाँ बस। फोकस। जेमी, आर यू एन इंट्रोवर्ट और एन एक्सट्रोवर्ट? अपन ऐसा प्लीज डोंट टॉक टू मी वैसा है अपना। दैट इज इंट्रोवर्ट, नो दैट इज साइकोपैथ, व्हाट इज इट, सोशियोपैथ? नहीं नहीं, बात करना है बात कर लेंगे। आई जस्ट फाइंड पीपल कॉन्वर्जेशन सो इरिटेटिंग, मतलब ऐसा डम आर्ग्यूमेंट करते तो जस्ट की रहने दे भाई। मतलब सी एज अ कॉमिक यू नो हाउ टू बी एन एक्सट्रोवर्ट, मतलब करने के लिए कर लेंगे बट नको आम्हाला। Yeah, many comics say that I'm introvert in real life, but on stage I'm a different person. That is true. कितना लोग अपना कमेंट सेक्शन में, कितना लोग इंट्रोवर्ट, हाथ ऊपर करो भाई, लाइव चैट में मालूम पड़े जरा अपना क्या डेमोग्राफिक है भाई का। हम लोग भी करेगा ना मार्केट रिसर्च। पब्लिक एम्बिवर्ट बोल रहा है बस, अपन एम्बिवर्ट। अच्छा एम्बीवर्ट, ये सही है। क्या आ रहा है चैट में, क्या आ रहा है? निश्चय फिलोसोफर, सलमान भाई ओपी। how many of you in the live chat would say that you're introverts if you can reply with a I don't know, I, yes, whatever. नेक्स्ट देखते तब तक। कमेंट किया है, इंट्रोवर्ट हूँ भाई, जैकलिन को फार्म हाउस से जाने को नहीं बोल पाया। अरे किस किसने लिखा है ये? कुंदन झा। अच्छा, पनवेल में है फार्म हाउस, वैसे तो आधा पनवेल भाई का ही है वैसे, है ना? मैंने सुना है वहां पे ही लगा ट्राइबल ओवरलॉर्ड ऐसा वहां पे, उसको हाथ नहीं लगा सकता है अंदर गाँव में। वो तो ऐसा, वो तो मैं भी अपने इधर टीयर 2 सिटी में कि मेरे को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। अच्छा तुम भी भाई है? हाँ वो अभी मतलब यू गेट की वैसा है ना, वो विपुल के जोक की तरह, एक फोन करूंगा तो ट्रक भर के लोग आएंगे। दैट इज कॉमन इन टीयर 2 है था। जो किसका ट्रक है ये सब? ठीक है, नेक्स्ट। स्क्रिप्ट राइटर, देयर इज अ स्कूल इन द सिटी एंड सम टीनेजर्स, नेटफ्लिक्स। क्या लिखा है? ये ये गया गया। 7 करोड़ सीधे आपके बैंक अकाउंट में। Yeah, that's what it feels like. कोई अच्छा लेकिन है आपने देखा है ऐसा कुछ बच्चा लोग का? नेटफ्लिक्स? बच्चा लोग का अलग आता है क्या नेटफ्लिक्स पे? अरे दर्रा, पूरा एक मतलब ऐसे 15-20 होंगे कि अरे वो सेम ट्रोप है कि मतलब हाई स्कूल में एक बंदा है बंदी है, सब लोग उसको गाली देते। कोई उसको गाली मतलब बस कि उसको फैट शेम कर रहे, या फिर कुछ भी ऐसा शेमिंग कर रहे। उसमें वो कुछ ऐसा भी डिप्रेशन सही, में चला गया, ऑफ उसकी कोर्स। वजह से ड्रग्स किया, बस यही सब है। संदीप शर्मा जी ने कमेंट किया इसके ऊपर। हाँ कि इन्फ्लुएंसर, मेरा कॉमेडी करने का मन, नेटफ्लिक्स ये रहा, एयरपोर्ट पे आपका होर्डिंग, इंडिया लीडिंग कॉमेडी टाइटल के साथ। Yeah, it does feel like a gold rush of people who have got through. By the way, guys, these are all on our Chalta Hai comedy page. So if you are on Insta, look us up, Chalta_Hai_comedy. You could even send us your memes if we know where they are from. We'll tag you. Otherwise, as you know, in the meme world, it's very difficult to know where the memes come from.
memes like Guruji had said once can neither be created nor be destroyed. They can only be copied from one page to the others. Just All like right. energy or matter. Yeah. कितना लोग अभी चैट में? 40. ओके, गिर गया नंबर, क्या हो रहा है? This is not dank enough for our people, I think. अरे I remember this one. I think ये मैंने ही शेयर किया, क्या मस्त है. Don't take responsibility, just मस्त है. ऐसा is how absurd if you can do it in any walk of life. This guy doing it and getting away with it till today. Every time China tries something at the border, नेहरू जी. वैसे विराट का फैन क्लब भी काफी रैबिड है ना, मैंने सुना. ये वैसे बाय द वे ये मीम था वो एकदम टाइम पे आया था कि विराट का करियर था एकदम शेक हो रहा था, लोग गाली दे हम्म देते कि अरे कुछ नहीं हम्म कर पाएगा ऐसा. हम्म. टाइम पे डाला है. All right, next. Oh, oh. Is this dank enough? Yes, this is as dank as it gets. And this is the actual photograph, right, from the of the Yeah, yeah. family. Make your team now. दादी जी अपन भी है. अपन ने कैप्शन में भी डाला है, पिताजी का हाँ. संदेश आया है, रजिस्टर करके 1 करोड़ जीतना है. What was the guy's name? The main guy that who was pushing everybody. जिसका मीम बना था ये उसका. मूछ वाला आदमी है, इतना मेरे को पता है, उसका हाँ नाम याद नहीं. हाँ. Look that. Oh my. वो बहुत हाँ, स्कैरी था. ललित के ना कमेंट में है ना, लिखा है ललित नाम था उसका. मैं ऐसे देखा नहीं है बुरारी. आई थिंक आई सॉ द फर्स्ट एपिसोड, आई थिंक. ठीक है. अबे पीपल टेलिंग मी कि दे कुडंट स्लीप एट नाइट. ऐसा ऐसा कुछ है क्या उसमें बुरारी में? क्या क्या? पीपल टोल्ड मी दैट दे कुडंट स्लीप एट नाइट आफ्टर वाचिंग बुरारी. दैट्स. मैं अभी सेम बोलने वाला था कि मैं खुद नहीं सो पाया था जिस दिन मैं ये देखा था. हाँ. इट्स मेसिंग विथ योर माइंड ना, कि मतलब वो एक अपने इंडिया में ऐसा कैसे, मतलब आई कांट बिलीव कि कोई अपने फैमिली के साथ ऐसा कर सकता है. जस्ट अरे पर इतना कल्ट है इंडिया में, क्यों नहीं हो सकता है? But what अभी was scary about it? Like just the fact that it happened, or the way they've shown it, or is it like there's जस्ट some mysteries in it, some supernatural element in it? नहीं, What इट्स is जस्ट कि scary? पेट्रियार्की की, मतलब जो जो बंदा मेंटली इल था, बेसिकली जो ललित, हाँ वो क्या था कि वो पेट्रियार्कल फिगर था वो फैमिली में, राइट. हाँ. एंड मतलब वो जो बोला, मतलब वो ऐसा ललित भाई की बोली बंदूक की गोली वैसा था वो. हाँ अदरवाइज, राइट. हाँ एंड मतलब कन्विंसिंग एवरीवन लाइक इंक्लूडिंग द किड्स. मतलब उसके अंदर ऐसा दिखा है कि बच्चे लोग लाइक दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस, बट फिर भी उनको मतलब जान जबरदस्ती करवाया उनके सामने. दे फकिंग, मतलब ऐसा बांधा था रस्सी वस्सी, मतलब दे सॉ द किड्स फकिंग डाई इन फ्रंट ऑफ देयर आईज. ऐसा तो वो दैट वाज जस्ट. बच्चे सिर्फ अपोज कर रहे थे, but they couldn't resist. को जबरदस्ती लटका दिया उसने. हाँ, क्योंकि द मार्क्स ऑन द नेक एंड ऑल से वो लोग ने पता लगाया कि अच्छा कि कि स्ट्रगल था, ऐसा हाँ स्ट्रगल समझता है उसको. हाँ ऐसा I था think वो. after Sushant case, so the entire country is an expert on this. No, ligature marks क्या होता है, कौन सा हड्डी टूटना मांगता है, कौन सा हड्डी नहीं टूटना मांगता है, कितना people are fascinated with all this. तो क्या मैं देखूं क्या? मेरे को एक एपिसोड देखा है मैंने. आपके लिए तो मजा है, मतलब यू विल लाइक इट. आई मजा आएगा. देखो देखो. मुझे डर तो लगता नहीं अभी किसी बात का. I'll watch it for I shouldn't say मतलब entertainment, but for I don't yeah, for kicks. But this cult was only like this is only their belief like, within the family. ऐसा they are not following any external guru or something. देयर वाज नो बिलीफ, कुछ नहीं था. इट्स जस्ट दैट गाय ललित, उसको सपने में आता था कि उसके पापा ने उसको ऐसा बोला है. एक्चुअली उसको स्किज़ोफ्रेनिया या समथिंग था. हाँ दैट्स हाउ लाइक ऐसा उसको स्किज़ोफ्रेनिया था, एंड ही यूज्ड टू राइट इन अ नोटबुक, राइट, हाँ
कि मतलब वो बन जाता था उसका बाप, एंड वो कैरेक्टर में वो लिख देता था नोटबुक में कि रमेश को ऐसा करना है, सुनीता को ऐसा Oh, करना acha. चाहिए. And his father is dead, but he would like because of the disease, he would feel that he's his father. Yeah, and he used to write in Wow. a notebook, and they have like Oh, preserved the whole notebook. And if you see the contents yeah. of those notebooks, it's just fucking चूतिया पैसा. Yeah. पोएट्री भी है क्या उसमें कभी कभी? All right, next. अरे हमारे जमाने में ये तारक मेहता का नेबर है ना, ऐसा कुछ है ना ये? Yes. भिड़े. है ये भिड़े है, ओके। Yes. अच्छा। आप कांदिवली में रह के तारक मेहता नहीं देखे? तो इमेजिन that's that's how much of an outlier I am. But do you like Gen Z people know what FTV was? No. मेरे टाइम तक तो मोबाइल फोन ही आ गया. But you have an idea, no? Because this meme is working, so it Yeah, means yeah, you know what it means. yeah. It it was purely fashion shows only, but like even that was something for men at that time. Yeah, yeah. And they would watch for hours for that one or two models who were like wearing something very revealing, sometimes nothing at all. And under the garb of fashion, it was allowed on cable. Otherwise, everything was censored. अभी भी censored है, पर अभी थोड़ा अलग censorship है इंडिया में. तो FTV. Maybe we got a F also, no? Like just that. Yeah. FTV, भाई FTV. Yeah, yeah. अरे, You, so you, there's you think the executives of the channel knew at that time कि पूरे वर्ल्ड में से इंडिया ऐसा कंट्री जहाँ पे लोग अलग रीजन के लिए देख रहे I हैं? don't even think they knew कि इंडिया में ब्रॉडकास्ट हो रहा है. पॉडकास्ट भी हो क्या चल रहा है चैट में? Are people still with us? Because I have no connect today. I am coming in from a mobile device today. किसने कमेंट किया है? A group of people who follow one guy watching memes together discussing Burari, which is the last guy, wondering how did one guy convince everyone. Yeah, maybe I should share some of my notes with you guys. गुरुजी का संदेश आया है. कितना लोग है अभी चैट में? तुम लोग लाइक किया कि नहीं स्ट्रीम को? मैं इधर शाम को टाइम निकाल के ये कर रहा है लाइव चुते के जैसा, एटलीस्ट मेक इट रीच मोर पीपल in a shady hotel room somewhere. Also, yeah, like and CFVR as always. Let's go to the next one. When you're praying and suddenly some dirty stuff comes on your mind. नीचे क्या लिखा है? God, no, no, I didn't mean that. Please forgive me. But this photo is usually used for different kind of meme, no? When like अजीब चूतिया types उसमें आता है ना ये बच्चा. Yes, yes, yes. ये वो वाला मीम में आता है ना, when no, you make some online payment and uncle says सब मोदी जी ने किया है. Cool. All right, next. Squid. Oh man, ये वो है ना अपना Welcome. वेलकम है, फरदीन का बाप है ये, फॉर द यंग पीपल हु मे नॉट बी अवेयर. फरदीन कौन है? हाई एक्टर है. फरदीन खान नहीं पता है, ठीक है, कांट ब्लेम यू आल्सो. I think even Fardeen has forgotten that he was famous at one time. Welcome was a hit picture, right? Yeah. And it was also like about this item numbers and comedy, like bathroom humor.
भी From वो what? जमाना ही वैसा था, हाँ? जमाना वैसा था कि बाबा नहीं। जमाना वैसा था ना, अब तो संस्कारी जमाना आ गया ऐसा। अब थोड़ा पब्लिक ले लेता है, दे हैव सीन फ्रेंड्स, तो दे थिंक कि उन्हें ह्यूमर पता है, तो अभी क्या कर सकते हैं। Friends is also part of tier 2 culture now, no? क्या है, हर एक मतलब एवरी मतलब हर टिंडर खोलोगे हर एक बंदी बोलती है ओ आई एम अ जोई, ऐसा डोंट पिक माय फूड ओह गॉड, और ये सब लोग सिर्फ मैदा खा रहे हैं पूरा दिन। क्या कर सकते हैं। Shit, brain cells dying as we speak. But India इतना बड़ा मार्केट है कि even after 50 years will be people discovering friends. So they'll be making money till they die. Great. All right, next. When you finally reach England, but you can't see any subtitle. ये बहुत फनी, कैप्शन भी सही। You might क्या गंदा क्रॉप किया है बच्चे को, ठीक है। The expression is priceless. सबटाइटल्स तो या एफटीवी के टाइम से चल रहा है। हाँ कितना लोग हुआ अभी चैट में? सही है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, ओके, कंसिस्टेंटली लोनली पीपल। आई थिंक ये उसमें वो भी है ना, मेरा स्क्रीन छोटा दिख रहा होगा अभी यूट्यूब पे। हेलो, तो पहले लाइव में वैसे दिखता है, तो नहीं चलेगा एक्सेप्ट फॉर द लास्ट वन जो कौतुक के साथ किया। ओके, ठीक है। डू वी हैव मीम्स लेफ्ट और शुड वी गो टू द क्यूएनए? अरे बहुत है, स्टॉक की बहुत, कमी नहीं है हमारा हाँ वो तो नहीं है, ठीक है, लेट्स डू द नेक्स्ट वन। What's stopping you from dressing like this, Taliban? Yeah, ये भी एक ट्रेंड था ना, व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग दिस, नो रैंडम पीपल मेकिंग आउट ऑन द रोड। व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग दिस? पॉजिटिव, टॉक्सिक पॉजिटिविटी। ओके, नेक्स्ट। एक ने लिखा पड़ोसी कमेंट। ओह, दिस इज फ्रॉम द एपिक फिल्म नायर। क्या बोला मैनेजर को इसने? अरे दूध से अभिषेक करो इनका, इन्होंने मैनेजर को बोल दिया सॉरी आई एम नॉट अवेलेबल ऑन वीकेंड्स। तुमने कभी बोला है मैनेजर को? हाँ, बोला है? मैं तो बोल देता हूँ मेरा शो है, मैं नहीं आ रहा, बाय बाय, यू डू यू, ओह ग्रेट, ऐसा। you do you. Does that mean कि जाके हिला ले? What does that mean? You do you just sounds so rude. I'm not available on weekends. Great. All right, कमेंट next. में पब्लिक पूछ रहा है कि आपने गांजा फूका है। नहीं नहीं, गुरुजी is completely natural and organic. वो भी ऑर्गेनिक ही है। It is organic in the whether it's fresh. If you burn it, how is it organic? No. तो यू प्रिफर खाना ऐसा, तो वो ऑर्गेनिक हो। नहीं नहीं, Guruji is neither confirming nor denying anything on a live stream. Although, as you guys must be aware, the oral route is different with different end results. Also, यस longer acting. यस यस। ये बात में सब लोग एक्सपर्ट है केमिस्ट्री का, बाकी अरे पढ़ने में जान जाता है लोगों का। अरे आप ऐसा मेरे को जाने दो। अरे अपन ने थीसिस करके रखा है इस सब में। थीसिस, Yes. ओके, ये दिस स्ट्रीम विल डू वंस वी गो टू कनाडा। अभी कल ही अमित शाह ने बोला पार्लियामेंट में ना अबाउट ड्रग्स के ऊपर, विल डू बिग क्रैकडाउन
if you seen the speech, and it's on the face of it very progressive. मैं शेयर भी किया, उसमें बोला है कि the way government sees this is that the people who are consuming drugs are the victims and they need all our sympathy, and we will do whatever we can to put them through these programs. क्या बोलते हैं उसको? अल्कोहलिक एनोनिमस वो सब था। हाँ, डिटॉक्स क्या, जो भी डीकैफ जो We होता have है, हाँ रिहैब, तुम्हें डीकैफ बोल रहे हैं तो but the dealers and the people who do the tashkari, as they say, unko there'll be no mercy for them. So that's I think it's a progressive stance. तो मैं शेयर किया तो उसमें लोग कमेंट बोल रहे हैं कि अभी वो ड्रग्स के ऊपर सेस डालने वाला है, इसलिए चालू कर रहे हैं सब। कोई बोल रहा है अंबानी रिहैब सेंटर में इन्वेस्ट करने वाला है। But still, if you saying the right thing is also important, no matter where it comes from. All right, next. Hostel girls. I had done this joke once where I say that I do not know who needs to know this, but fairy lights are not a good substitute for therapy. तो फेरी लाइट का तो लोगों ने एकदम चोटदार ना, फेरी लाइट अभी सब लोग इतना यूज किया है कि ऐसा मैं देखा है, अभी वड़ा पाव वाला लोग भी लगाता है, पता है, ज्यादा ज्यादा जगमग लगना मांगता है ना, aesthetics. ambience. But everybody does it and it's not aesthetic anymore, I guess. Also, China से, these are not fairy lights, these are China lights. China lights. Yes. तो फेरी लाइट्स कहाँ से आता है फिर? जापान से आता है क्या? चाइना लाइट्स जिंदाबाद, दैट इज राइस लाइट्स भी बोलते हैं इसको। ऐसा क्या बोलते हैं? राइस। राइस लाइट्स, राइस, हाँ, क्योंकि वो राइस जैसा उसके शेप में रहता है इसलिए। दैट इज द शशि थरूर वर्जन ऑफ इट। ऐसा राइस लाइट्स, राइस लाइट्स, वाह वाह, ओके ओके। हमने अभी अभी जस्ट यूज किया घर पे येलो लाइट डालना, ये तो वही था ट्यूबलाइट, नो, एंड ट्यूबलाइट अभी बहुत लगता है आंखों को। आई थिंक आई हैव बिकम यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ लाइटिंग बिकॉज़ ऑल द कैफेज एंड मेन्यूज वी गो टू दे हैव सॉफ्टर येलो लाइट्स, which is good also, otherwise it looks like you're living in an ICU all the time or an operation theater. इतने लाइट का जरूरत क्या आपको? white blaring light. All right, next. बेटे से आईआईटी की तैयारी करवाई ताकि तगड़ा दहेज ले सके, बेटी से एम्स की तैयारी करवाई ताकि तगड़ा दहेज देना ना पड़े। स्कीम। बट क्या अगर एम्स वाली बेटी है तो दहेज देना पड़ेगा ऐसा? डॉक्टर है तो देना नहीं चाहिए ऑब्वियसली, बट आई नो पीपल विल स्टिल डू इट। काय करायचं? आपने ऐसा किया था क्या? आईआईटी? नहीं, मैं बीएससी किया है। इंजीनियरिंग में मैं स्कूल में क्या था, इंजीनियरिंग स्कूल में भी होता है कभी कभी। स्कूल में क्या इंजीनियरिंग? 8, 9, 10 में होता है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स। बहुत मरवाया भाई, तो स्कूल में डबल शिफ्ट कर रहा है बच्चा खेलने के बजाय। लेकिन फाउंडेशन बोलते हैं था, फाउंडेशन। हम लोग सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट बोलते थे पैसा। एटलीस्ट मुंबई में 2 ही स्कूल है, मेरा स्कूल और सेंट फ्रांसिस में, और द ओनली एडवांटेज बिसाइड्स द नॉलेज इज दैट यू गेट प्रेफरेंशियल एडमिशन इनटू डिप्लोमा कोर्सेस। तो डिप्लोमा किसको करना है? अभी डिप्लोमा होता है 4 साल का, उसके बाद छोटा मोटा नौकरी लगता है, एंड ऑल यू विल नेवर बी अ ग्रेजुएट। तो दैट वाज ऐसे ही बस कर लिया, सेक्सी लग रहा था कर लिया। तो आई हैव फेयर नॉलेज ऑफ द बेसिक्स, बट फिर कॉलेज में नहीं किया। नेक्स्ट, इंडियन पेरेंट्स विल सेव एवरीवन एल्स जंप्ड ऑफ। अच्छा, ये तो एक करुण इसका भी जोक था ना। हाँ,
अगर तेरा बाप तुझे बोलता है, वो वाला था ना। हाँ, तेरे दोस्त बिल्डिंग से कूद रहे तो तू भी तू कूदेगा क्या? व्हाट इज द फॉलो अप लाइन उसने वो जोक में? के मतलब नहीं बाप, मैं इंटेलिजेंट आदमी हूँ, नहीं कूदूंगा, मैं दूसरे लोगों के साथ हैंग आउट करूंगा। रेवोल्यूशनरी। तुमने कभी किया था क्या ये सब, आईआईटी वाईआईटी का सेंटर ऑफ वेंटर? कोर्स, ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स। कितना 11 कितना 12 कितना से टाइम? 10th के बाद की परसेंटेज अच्छा है 10th में, तो 11 12 डाल दिए आईआईटी वाले ऐसा कोचिंग सेंटर में। 6 लाख रुपया लिया उन्होंने बाय द वे, 2 साल अच्छा, पढ़ाने। 6 लाख रुपया? या वाओ। और ये क्या 11th के साथ में होता है ना, यानी वो भी पढ़ो और ये भी पढ़ो? हाँ हाँ, तो दे somewhat give you leeway in terms of like जो एचएससी वाला एस्पेक्ट है। नाउ लुकिंग बैक एट इट, अगर एचएससी में अच्छा कर लिया होता तो इट वुड हैव बीन बेटर। क्या कर सकते हैं? तो क्या एचएससी थोड़ा तो ओवरलैप नहीं होता होगा सब्जेक्ट का? नहीं? नहीं होता ना, ऑलमोस्ट ओवरलैप ही होता है, ऑलमोस्ट। मतलब हम्म, 90% सेम ही है, बट 10% थोड़ा डिफरेंस है। मैं बच गया ये सब स्ट्रेस से। ऑलराइट, नेक्स्ट। अरे 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 अरे, डीप डीप स्टेट मीम। ये डीप यू स्टेट अपन कॉन्स्पिरेसी हाँ वाले उसमें करते हैं discuss। हाँ। डीप स्टेट। One thing on our mind, guys, is to do one episode on conspiracy theory memes. तो अगर आपका समर्थन हो तो करेंगे, let us know either on Insta or on Reddit. Yes, we are on Reddit also apparently. I am told. I cannot navigate one more app, but I am told that it's a growing community slash cult on Reddit also. Mostly young men, no, who have no place else to go. So that way I'm competing with Andrew Tate or Andrew Tate, as they say in Maharashtra. थोड़ा गुरुजी को लेना पड़ेगा ये ओरल। क्या चल रहा है चैट में, बताओ जरा। Is there any rehab program for people constantly listening to vegans? Why Yes, veganism is the best? we have for vegans. क्या होगा उसमें, चीज खिलाएगा रोज तुमको? तो by I मैं never heard of have you ever heard of a vegan who's come back to the normal food? ऐसा तो नहीं, बट मेरा एक दोस्त है, ठीक है, टीयर 2, हाँ, ओके। अगेन या टीयर वापस 2 टीयर है। टू। यस यस। तो ही इज वेरी, क्या बोलते हैं ऐसा कि मतलब वेरी कॉन्शियस ऑफ द एनवायरनमेंट की, मतलब अरे पेड़ उगाएंगे, वो कर देंगे, मुंबई इंडियंस की तरह झंडा गाड़ देंगे एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, राइट? हाँ, लोहा गला देंगे। हाँ हाँ। हाँ, तो मेरे को बोलते, मैं हम लोग एक बार गए थे पाव भाजी खाने, ठीक of है। course, यस। as व्हाट people do in tier 2 towns. पाव भाजी खा रहे, मैं बोला चलो खाते, तो बोलता है अरे पाव भाजी नहीं खा सकता। बोला पाव भाजी क्यों नहीं खाता? तो बोलता है अरे उसमें बटर आता है। बोला अबे बटर, Ah, okay. So what? Like he's vegan completely in या tier 2 town? यस यस, तो बटर आता Yes. है। हाँ, तो बोलता है क्या होगा इससे? बोलता है गाय वाय बचेगी। मैं बोला उससे क्या होगा? बोलता है एनवायरनमेंट बचेगा। मैं बोला यार योर होल एग्जिस्टेंस इज अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट, तुम्हारे लिए भाई थोड़ा पेड़ ज्यादा हो वो गए। तो वो है अभी, but by that argument you cannot do anything then, because you have to stop living only. For veganism, even I would like to stop dairy products, but that's a long-term goal in my book. Uh, there should be a rehab program. No? मैं एक दिखा था, there is one, guys, if you can look it up, there is one mockumentary
called Carnage. ठीक है, BBC का है, and a comic has produced it. तो उसमें story ऐसा है कि the entire world has gone vegan. Okay, and the story is set in 2050 or something, no, in a vegan world, post-vegan world. तो उसमें there are some people now left who were not vegan when they were young, no, because now it's been one generation of complete veganism. Everybody is vegan, but a few people when they were young, no, they were not vegan. So they have support groups for those people because they feel guilt कि at one time we had milk. So then the counselor tells them in today's session, we will all just say out the name of our favorite cheese and you don't have to feel bad about it. So all old people are there holding hands and they are saying, mozzarella, cheddar, or वो रो रहा है. It's okay, you did not know better, you are a young person. But it's a great one. You got to see it. It's very funny and sort of like it's very surreal because that's how things happen, like the movements and revolutions, for lack of a better word. Next. Yeah. Oh God. ये अपन डाला था क्या? इसकी माँ इंस्टाग्राम पे नाचती है. इसमें क्या ही एक्सप्लेन करेगा? This is fucking hilarious. Seems extremely plausible. मतलब ऐसा हो सकता है. Yeah. But there must be many content creators who already must be having kids, no? Like they're old and they started late in their life. नहीं? Yeah. तो हमारे सोसाइटी के ऐसा एक दो सोसाइटी छोड़ के मैरिड कपल बेसिकली, ठीक है. तो अभी हाँ, तो अभी ऐसा है कि आंटी जी को मजा नहीं आ रहा है कि मतलब जिंदगी में क्या करे, कुछ टाइम पास नहीं हो रहा है. तो नाउ शी हैज स्टार्टेड डांसिंग ऑन इंस्टाग्राम. डांसिंग रील अपलोड कर रही है ऐसा वैसा. तो नाउ अभी कैसा हो गया है कि उधर उसका और उसके सास का लफड़ा होने लग गया है बिकॉज ऑफ डांसिंग. ये मतलब ऐसे कैसे नाच रही है. फेयर क्वेश्चन. ऐसे कैसे नाच रही है? और नाच भी रही है, मंगलसूत्र पहन के नाच रही है, साड़ी पहन के. ऑल ऑफ दिस स्टफ इज गोइंग ऑन, राइट? हाँ, तो एंड नाउ all the boys in the society are like कि अरे क्या हो गया, ये आंटीज आर सेवियर, ऐसा वैसा कि हमें शुगर मॉमी बना लो. all of this stuff is going on. Really? Yeah. So she's getting views and all. Yeah, all the boys in that society were head over heels for her. मतलब अरे क्या ही है ये तो. She's an apsara, fairy, soonpari. What? ऐसा सब. Because she's dancing or she's good looking in general also? She's a bit good looking, but ऐसा डांस भी है प्लस by tier 2 standards. Yes. यही बोलेगा ना, अभी और क्या बोलेगा. But that thing was epic because उसकी सास मतलब ऐसा, मतलब सोसाइटी में फंक्शन चल रहा है नवरात्रि का, वहां पे बोल रही है कि ये यहाँ पे भी नाच रही है, इंस्टाग्राम पे भी नाच रही है, नाचना कब बंद करेगी, ऐसा हो रहा है. हमको पोता कब देगी. Oh man, does she say I'm such a Phoebe? I'm such a Phoebe. But would you ever consider dating such a girl? नहीं. I mean, never thought of it that way. It's like you end up liking somebody in general, and then this is also a part of their life. नहीं यार, मुश्किल है actually. I wouldn't ever respect them enough to मुश्किल. And obviously look at the practical aspect. If you end up dating a person, half of your life will be holding the camera and doing retakes for these shoots. अरे मेरे को PTSD तो वैसे भी हो रहा है ना. वो तो I'm telling you guys, I've traveled the whole country, the remotest locations,
on hilltops, on waterfalls, there's always one guy holding two bags and doing retakes for a girl who trying to do the perfect hair flip. और नहीं यार, वो बेचारा बिल्कुल आराम से चुपचाप कर रहा है. हाँ, one more. जैसे काफी पीटीएसडी होता है अभी. एक मिनट. All right, next. Let's do a few more and then go to the Q&A. Time is running out. Just saw someone my age being extremely talented. They is doing. ऐसा होता है क्या तुम्हारे साथ भी? Even at Gen Z level, हम तो अभी बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं. It's look at ना कि अभी मैं देख रहा हूँ ऐसा कोई बंदे को ऐसा म्यूजिशियन है and all, like he's killing it over the now I'm realizing अच्छा वो भी 22 है तो ऐसा सही है कि मचा रहा है, हम क्यों नहीं मचा रहे. ऐसा आपको हुआ था क्या पहले भी? ऐसा होता है कि I think everybody goes through this, that till they're in the mid-20s, no, they feel अभी भी टाइम है, you know, अभी जो भी चल रहा है वो ठीक है, चलाना पड़ रहा है, लेकिन टाइम है अभी भी. अपन अभी भी क्रिकेट खेल सकता है, गिटार सीख सकता है, आप फेमस बन सकता है. But then when you get beyond 25, then you can see that the window is closing. Actually, window is already closed, but just that your delusion refuses to go away. So with me, what happened is because I started stand-up later in life than the average comic. Almost every room I would enter, I would be the oldest person there. Because other people my age are already tapped out in their life. Gotten married, got loans, got liver damage. So they were nowhere to be seen in the circles I was hanging out in, which is all the open mics and the shows and the venues and the events that we are a part of. And they're actually refreshing because you stay young that way yourself also. No? You hang out with people your age, वो लोग ये सब बात कर रहे हैं, कितना इन्वेस्ट किया पैसा, कितना EMI आ रहा है, इसको ये बीमारी हो गया, बीवी चाय नहीं बनाती है ठीक से, ये सब. It was good actually in my case. I think it generally, at least in stand-up, it's better to start little late in your life. Otherwise, you become too brash because the power it sort of gives you, no? And that's why you see young comics, they're all fucking choots only. तो तुम खुद कभी काम किया नहीं लाइफ में, तुम खुद का बिजनेस ना किया, ना कभी पैसा जनरेट किया, डायरेक्ट तेरे को माइक मिल गया हाथ में और तेरे सामने टैक्स पेयर बैठे तो उनकी खाली फोकट ले रहा है विदाउट रीजन, यू जस्ट शिटिंग ऑन देम. अरे तू क्या करता है, तू इंजीनियर है, तू क्या है. Meanwhile talking about communism and shit. नेक्स्ट क्या नेक्स्ट 17 साल का कॉमिक कम्युनिज्म बोल रहा है, अल्लाह रहम ओ दे. या वो तो वही ना, हम लाइक यू नॉट हिट प्यूबर्टी प्रॉपर्ली आल्सो. कार्ल मार्क्स ने ऐसा बोला था, अल्लाह रहम दे. या and you see that they are brash because they've not seen the world, and suddenly power trip, no, कि मैं बात कर रहा हूँ जो भी माइक पे लोग सुन रहे हैं, because you're still not out of school completely. In your mind, you have the authority figures that you had to obey, like your teachers and principals. And now suddenly you're on this side, like a teacher almost. No, it can go to your head. And even if it does not go to your head, आप दुनिया ही नहीं देखा तो आप क्या बात करोगे? यही ना जो आपकी लाइफ में हो रहा है, बंदी चली गई, हुक्का में रिंग निकला. तो yeah, it does happen, and I accepted it now. In fact, I talk about it when gainfully employed, like how I used to try to learn to play the guitar, but नहीं हो रहा था अपने से. You should give up after a point. Yeah, move on to the next thing. No, और कुछ करो. ये आपके लिए नहीं है. पब्लिक को ऐसा करना ही है. जैसे मैराथन होता है, तो मुंबई मैराथन अभी पता नहीं होता है क्या अभी भी? पता नहीं. तो ये सब वो है ना कि हसल कल्चर. या अभी उनको पता है मैराथन होता है कोई भी सिटी में, सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंच जाता है.
भले कुछ फिटनेस है नहीं है, पहले किया है नहीं है, अभी आया है तो करने का अपने को. Do you know Mumbai Marathon में average पे 10% of all the participants needed serious medical attention. 10%. 1 in 10 had to go to a doctor. Isn't that number too high? It's happening largely because all these managers and all these people in corporate jobs suddenly feel कि ये करेगा 1 महीना मेरा सब पाप धुल जाएगा. ऐसा नहीं होता है ना. You need to build up to it. No? They are chasing it like that, chasing a sales target in the company. और फिर पता है, more than anything you get ligament का problem होता है, and that lasts longer than a fracture also. Yeah. All right, next. वलीमे की दावत. How come all of them are like that? Blonde मुंडे. बट ये जो है टिकटॉक वाला एस्थेटिक, ये कहाँ से आया है? व्हाट इज द हिस्ट्री? Even I am confused कि मतलब it's just started, right? It हाँ, all started with that haircut जो था साइड में छोटा ऊपर का लंबा, right? गार्बेज हेयर कट, वो गार्बेज वाला ना. यही बोलता है ना उसको, क्या बोलते हैं? अंडरकट बोलते हैं टेक्निकली. क्या बोलते हैं? अंडरकट. अंडर कट. वाह वाह. इज इट अ कम्युनिटी थिंग कि कुर्ला बोले तो सब कुछ आ गया? क्या बोला वो कुछ है? कुर्ला कुर्ला. It's not necessarily. It's just a tier 2, tier 3 thing. कि मतलब बच्चे को रेबल बनना है, घर वाले बनने नहीं दे रहे, बट ऐसा लड़ के बाल कलर करवाया है, ऐसा फॉलो कर. अरे लड़के बाल कलर करा. अरे तो आप स्ट्रगल देख लो इंडिया का. You know that page I mentioned in my video, Reptiles of Kurla. What a page, dude. क्या content आता है उसके ऊपर, like truly heroic content. And that I think someone told them कि आपका mention है stand up में. So they shared my video saying thank you. But I think they don't get it. But they are also like picking up jokes on Kurla guys only ना, मतलब वो लोग भी ironically ही कर रहा है. वो पता नहीं ना, because the way they share it is like they believe in. समझता नहीं है. But then I guess if it was not ironic, they wouldn't call it reptiles in the first place. No? Yeah. So, ऐसा नेक्स्ट क्या हो सकता है? एलियंस ऑफ मानपुर क्या आएगा? जरा देखो चैट में क्या हो रहा है. प्लीज एक्नॉलेज अवर पीपल इन द चैट, बिकॉज़ आई कांट डू इट टुडे. इफ यू कुड रीड आउट अ फ्यू ऑफ दोस थिंग्स. आल्सो कोई सुन भी रहा है कि नहीं? कितना लोग है बाकी अभी? है लोग? 45 लोग हैं. ओके. So this functional psychopath is saying it started with Salman Bhai in तेरे नाम. This is a new theory, or is it established theory? It's beyond the last theory. Beyond the last theory. What I remember was तेरे नाम was his comeback movie, right? Like I don't know. मतलब I was 4 बनता था मैं तभी. You are, oh fuck. Now I really feel old. So after the 90s, Salman boy, he disappeared for a while, right? Because he was into so many extracurricular activities, for lack of a better word. Yeah, and Tere Naam was his comeback movie. So he made a big comeback with that movie, and obviously वही था ना, एक तरफा छपरी प्यार पिघलना नहीं है types, isn't that? Original वो था ना. Oh, don't. मैं अभी भी इमोशनल होता हुआ था तेरे नाम सुन के. Really? तुमने कब देखा? तुमने बाद में देखा obviously. Yeah, of course. YouTube पे देखा. राधे भैया. राधे भैया, yeah. पर यार casting must, I had to give it to them. Top notch casting. वो है ना, रवि किशन है उसका दोस्त. Yeah.
और आई थिंक गोपाल दत्त भी है उसमें. गोपाल दत्त तेरे नाम में Yeah. गोपाल दत्त है? Yes, look it up. I think वो second third friend वही है, गोपाल दत्त है. और आई थिंक हीरजी भी है ना, हीरजी, that comic actor. एंड सचिन खेड़ेकर है ना उसका बाप, या जो भी उसका भाई बना है केयर टेकर उसका. तो और निर्जला इज आल्सो लाइक प्रॉपर, शी इज अ प्रॉपर टेक्स्ट बुक निर्जला. शिट, गोपाल दत्त इज इट तेरे नाम? क्या बात कर रहे देखो सर्च करो, यार, दिख रहा है हाँ, सच है में. ना. हाँ. दैट गोपाल दैट लॉन्ग बैक. एक बार गोपाल को लेके आते स्ट्रीम पे, क्या बोलते हो? यार आपको उससे फनी आदमी नहीं देखा मैंने. बात करता हूँ एक बार. उस नेक्स्ट. हाँ, उसको एक्चुअली बियॉन्ड द लास्ट पे भी लेके आ सकते हैं. हाँ हाँ. और लाइक नेक्स्ट ईयर ऑनर मेरे क्लाइंट ने बोल दिया. अच्छा, इज दिस? So this meme for our audio listeners, which it says वकील बोल रहे कि योर ऑनर मेरे क्लाइंट ने टीबीएच बोल दिया, अब गीता पे हाथ रख. To be honest, I'm such a Phoebe यार. अरे All right, next. Me patiently watching the cook, what the cook is doing after placing my order at fast food. But now there's a new thing. Now you don't just watch it. You have to also record it on your phone and put it out somewhere. In a reel with Ed Sheeran in the background for no reason. ये आप देखते हो क्या था? फूड रील आता है जो. रील नहीं देखता, पर वो ASMR के नाम पे मेरे YouTube पे बहुत घुस चुका है. अच्छा. So for some reason I'm randomly watching fruit cutting in Korea and shit. फिर ये सब है ना, वो फार ईस्ट का जो सब आता है ना खाने पीने का, वो बहुत डेडली होता है. उसमें वो ऑक्टोपस काट रहा है, और स्नेक काट रहा है, एंड ही डूइंग इट लाइक इट डज इट एवरी डे, ऐसा पता है. तो और उसका सब वीडियो में मुझे कमेंट ये होता है, व्हाई एम आई वाचिंग दिस, व्हाट इज रॉन्ग विथ माय लाइफ, It's 2 2 a.m. in the a.m. night. Yeah, Yeah. and I can't stop watching this. So, but for every video that you see like this, no, which is like some random video जिसपे millions of views है, there must be similar videos which have no views also, no? बहुत लोग ने ऐसा सांप मारा रहेगा ना जिसका व्यू नहीं आया रहेगा, क्या बोलता है? हाँ हाँ, of course. We just see it's just a bias, no? We just see the successful ones and then we start cutting snakes ourselves. But what, I don't know what, I am a pure vegetarian. I don't know what is appealing about it. But आते रहता है बस feed पे. I have to really consciously make an effort to put it away. और प्रॉब्लम क्या है, हम शो कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो वो उसमें एटलीस्ट शो अपडेट डालना पड़ता है. एक बार आपने ऐप उठाया, फिर आपको वो दिखा रहा है कोरिया में कोई पाइनएप्पल काट रहा है फॉर नो रीजन. और एक बता वो आता है कायरोप्रैक्टर का, तो उसमें वो ऐसा कड़क करता है ना, ऐसा वो पब्लिक को मजा आता है देखने का ना, क्रैक्स. एंड लाइक एनी चैनल, देन ही विल डू बिगेस्ट पॉप्स ऑफ द ईयर, नो कंपाइलेशन वीडियो. तो उसमें सब कट. बहुत सच में. Yes. Biggest box of the year. What the fuck? Biggest pops of the year. Yeah, they have their own nomenclature now. So इसका क्या है, डॉक्टर ब्यू आइसनहोवर ये नाम है. ही इज द बिगेस्ट चैनल, और एक दो और भी है. तो दिस गाय नो, ही लाइक फकिंग बिल्ट हिमसेल्फ. उसका मेन क्या क्लाइंटल है ना, वो बहुत सब लोग ऐसा फेमस लोग आते हैं, मेनली रेस्लर्स. नो, देखो रेस्लर्स गेट बीट अप सो मच, ऑल द प्रो रेस्लर्स दे कम. सब ये मतलब बॉबी लैशली सब लोग आते हैं इसके अंदर, शेमस. Even the women wrestlers come, no, they are also doing their little bit. तो फिर कभी कभी अदर सेलिब्रिटीज कम, तो उनके साथ पूरा आधा घंटा का वीडियो उनसे बातचीत करता है, और फिर उनको वो सब कर रहा है खतरनाक. पब्लिक देखता है, मिलियंस में आए व्यूज का भी. लेकिन ऐसा इंडिया के फूड चैनल्स को देखा है क्या, क्या क्या बनता है इंडिया में? आता है ना वो पटना में किधर ये बन रहा है कुछ, वहाँ जो भी वहाँ का डिश विश, and they show it as if it's like a big revelation, like no, you've never seen this before.
तो मैं अब आता है अपन देख लेता है, बस जब भी वो मुंबई का था तभी मालूम पड़ा कितना चुतियागिरी हो रहा है, क्योंकि मुंबई का क्या दिखाता है जो अपना सैंडविच है यहाँ का, और अपन वो सैंडविच को थूकता भी नहीं है अभी, और दे शोइंग इट इज लाइक सम फकिंग एक्सोटिक डेलिकेसी। और ये इतना फैल चुका कि अपने एरिया में कांदिवली वेस्ट महावीर नगर का फूड का टूर हो रहा है। हाँ तो तो स्ट्रीट फूड तो रहता। स्ट्रीट फूड टूर है, हम लोग कह रहे हैं ये, that means us watching the same thing for other cities must be looking this dumb in that city also, no? या कि या कोई पटना का देख रहा है बिरयानी बन रहा है, उसको लगा छोड़ ना, ये बिरयानी को तो हम लोग खुद खाया नहीं 10 साल से, आप लोग देख रहे हैं टूरिस्ट बन के। और क्या क्या चल रहा है पता है, महावीर नगर में पूरा R&D हो रहा है ना, तो ब्रेड का क्या गांड मारा है वो लोग, रोल करके फिर डुबाता है किसी के अंदर, फिर टोस्टर में जाता है, फिर बाहर आता है, फिर वापस डुबाता है ब्रेड को। It's- ये उनका ASMR है ना। आई थिंक इन इंडिया ASMR इज ट्रैफिक नॉइस, नो, क्योंकि कांस्टेंट बैकग्राउंड में वही चलता है। कितना बज गया, टाइम तो हो गया भाई। आई थिंक वन लास्ट मीम देन वी कैन डू अ फ्यू Q&As, जिसके लिए लोग बैठे हैं पेशेंटली। था दो अब तीन करते। अरे अपन अपने मजे मार रहे हैं, मुझे जाने का शो में। चलो 3 करते हैं, गिन के 3 हो गए। TCS, have TCS, TCS, Ramesh, go to Manali trip. What the fuck is this for real? हो हाँ, सकता 1 लाख मिल भी गया उसको। यार TCS सर कौन बोलते? अरे वाटर मार्क देखो, फ्रस्ट्रेटेड TCSR। या प्रॉपर TCS है ना, मतलब बटन भी नहीं पहना ऊपर वाला। TCS, अरे TCS रमेश को, हाँ नाम भी रमेश है, और मनाली ने ये तो मीम ही है, बनाया है किसी। बट ये पता है बहुत सारा आया ना अपने को इसमें, लॉकडाउन के टाइम पे अपन शेयर भी किया है, किसी को ब्लड चाहिए, किसी को प्लाज्मा चाहिए, ये चाहिए। एंड इवन दैट टाइम आई वाज फीलिंग यार अपन सब वेरीफाई तो नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसा चलेगा। देन आफ्टर अ व्हाइल आई स्टॉप एंटरटेनिंग, बिकॉज फिर पता है लोग रैंडमली बोल रहे हैं कि आई हैव लॉस्ट माय जॉब, गिव मी मनी, माय सिस्टर्स मैरिज, गिव मी मनी। ऐसा करेगा तो फिर कैसा चलेगा, फिर देन एवरीबॉडी, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी, इवन आई नीड मनी, यू नो, इवन आई वांट टू गो टू मनाली अगेन। But and then how do you verify? No? And they just write, someone died in my family. Now I have depression. Please give money. ऐसा कैसा? परेशानी। And after seeing that, no, my respect for super chat went up. कि चलो एटलीस्ट कुछ तो कर रहा है बंदा पैसा मांगने के पहले। अच्छा, अपना सुपर चैट अभी तक एक्टिव नहीं हुआ ना, है क्या ऑन दी चैनल? यस, इट्स है। एक्टिव। हाँ हाँ, नेक्स्ट अभी नहीं आ रहा है? नहीं नहीं, आ रहा है आ रहा है, ओके। अच्छा, सिर्फ लोग चिंदी है, ओके ओके। आ रहा है। That reminds me, guys, if you're not subscribed so far, please do so to this new channel. This is just for Beyond the Laughs, and it's for like random stuff like this, which I cannot do on the main channel because it fucks up my average. Um, do subscribe to it, and also if you're not so far like this team, we are about to go into the Q&A now, and CFBR as always. All right, second last meme for today. TCS. Must be willing to work in a high place and exciting environment. हाँ, ये तो है ही। एक्साइटिंग, एडवेंचरस, स्काई डाइविंग, क्या क्या बोलता है लोग। बात तो सही है, कितना ढोंग है ना ये सब लाइफ में, अपने को भी करना पड़ता है। ये तुम ये सब बात करता है कि इंटरव्यू में, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अपॉर्चुनिटी टू ग्रो माय स्किल सेट and align with company goals, हाँ eventually हाँ to arrive at an orgy of profits, ऐसा तुम बोलता है क्या? हाँ हाँ, of course। हाँ बोलता है, मैं we can say it with a straight face without laughing, बोल सकता है क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसा ये नहीं पूछता। मैं आई आस्क इट इन अ पैसिव अग्रेसिव वे कि अरे तेरे कंपनी में है क्या उतना पोटेंशियल मेरे पोटेंशियल को ग्रो करने के लिए। लाइक आई लिटरली, Really? हाँ हाँ, आई स्ट्रेट अप आस्क दिस How क्वेश्चन। do you ask? What is the line like for our listeners सारा to help them? अच्छा, कॉर्पोरेट में कैसे बोलता है ऐसा हाँ कि हाँ, मैं यही पूछता हूँ कि हाउ डू यू थिंक योर कंपनी कैन नो हेल्प मी ग्रो माय स्किल्स, कि व्हाट ओहो, इज इट अबाउट योर कंपनी that will make me a better product manager and stuff ऐसा सब। तो really? हाँ And हाँ, they answer also. क्या यार, क्या यार, दिस इज
एंड्रू टेट फिलोसॉफी की क्वेश्चन तुम सामने वाले को करो, तू बता भाई तेरी औकात है कि नहीं, ऐसा। दिस अच्छा, इज, तुम्ही पण आहे का टाटे साहेबच्या फॉलोअर? अरे ऑफ कोर्स ऐसा। क्या अभी मतलब इट वर्क्स फॉर मी एवरी टाइम इन इंटरव्यू, मतलब वो सामने वाला चौक हो जाता है कि अरे अरे क्या बात है, व्हाट रियली? इज दिस तो गाय। तो आर यू अ टाटे कर दे? Okay, last meme for the day. The last time my dad hugged me, it was because there was no light and he thought I was the maid. Oh, what a sad note to end on. Oh, God. You think we'll ever have like open relationship culture widely in India? किसी बैंड्रा तक ही रहेगा? बांद्रा देखो, में भी। मीरा रोड में भी होता है, लेकिन वहां पे फिर कैसा ऐसा सब होता है, नहीं अफेयर होता है छुप छुप के या ओपन सीक्रेट टाइप ना, ऐसा मेड बेड ये सब होता है। तो होता तो है ही ना, बिकॉज ह्यूमन कल नेचर इज द सेम एवरीवेयर, इज जस्ट अबाउट टर्मिनोलॉजी, नहीं? आई थिंक इंडिया में तो मतलब थोड़ा, लेट्स नॉट से द नेम ऑफ दैट रिलीजन, बट वहां पे तो लीगल है। तो अरे 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 हमारे अरे, भी मतलब परपेचुएटिंग स्टीरियोटाइप्स। अरे आई एम नॉट परफेक्ट, मतलब हमारे इधर अंकल लोग को अभी भी लगता है कि मतलब हाउ आर दे, मतलब वो लोग को कैसे करने मिल रहा है, हमको क्यों नहीं मिल रहा है, लाइक लिटरली मैं अंकल को सोसाइटी में। बोलो तुम्हारा गेम है क्या इतना वेंचर, तुम इतना चौड़ में घूम रहे, एज इफ द लॉ इज स्टॉपिंग यू। ये एक बीवी जैसे संभल नहीं रही है। बट अरे यू नो वी आर डिस्कस्ड दिस नो व्हेन वी आर डूइंग द अदर एपिसोड्स कि ये अलाउ है रिलीजन में, वो ठीक है, लेकिन सेंसस में बोलता है कि देयर आर अदर कम्युनिटीज वेयर पॉलीगैमी इज मोर कॉमन देन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। हाँ, अरे डू यू आपने ये देखा कि नहीं, अरे there is a, ये तो एकदम क्रेजी, there's a यूट्यूबर, ओके, उसका नाम ये वो, बंद कर दो स्क्रीन शेयरिंग तब तक। अच्छा हाँ, हाँ, यूट्यूबर। या तो there is a हाँ, यूट्यूबर, ठीक है, उसका नाम अरमान मलिक है, ठीक ये है। सिंगर नो? नहीं, नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो वो वही वही ना, तो उसको यूट्यूबर क्यों बोल रहा है? अरे ऐसे ही वो सिंगर अलग है, ये बंदा चल, अलग है, ऐसा। अलग बंदा, ओके 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 अच्छा अच्छा ओके। ठीक है। तो हाँ उसपे कहता है कि एक बंदा है वो, हाँ, तो वो ऐसा सब वीडियो डाल रहा है कि अरे दूसरी वाइफ घर आ गई, ऐसा एक वीडियो दिखा में। रहा है। हाँ, अरे क्रेजी किसी ऐसा, टाइटल का नाम है बोथ वाइफ्स आर प्रेग्नेंट। हाँ, तो यानी ड्रामेटाइजेशन है कि लाइक अ वीलॉग एंड ही क्लेमिंग टू बी दिस एज इज इट्स अ रियल लाइफ? इट्स अ इट्स अ रियल थिंग विथ, मतलब ऐसा प्रॉपर ऐसा, ये भी देखोगे आपकी उसमें, मतलब ऐसा व्लॉग टाइप ही है वो। लॉग टाइप ही है ना? हाँ, तो बट देन दिस इज बेटर देन वरुण प्रूथी नो? है? बेटर देन। वो है ना, देयर इज दिस गाय कॉल्ड वरुण पृथ्वी, जो पहले वो था, दिस इज द गाय हु यूज्ड टू गिव अवे मनी टू बेगर्स ऑन द स्ट्रीट एंड मेक वीडियोस आउट ऑफ इट। पता है? नहीं 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 पता? अरे, नहीं नहीं। हाउ कम यू आर मिसिंग आउट ऑन दिस, इज ग्रेट कंटेंट। So he would just find beggars or even like like people selling small stuff on the street, just give them like a lot of money or just buy everything that they have, and then they will smile and he will put the video there. तो अभी उसका शादी हो गया है या पता नहीं, पहले भी हुआ रहेगा। तो अभी उसकी वाइफ को भी लेके आता है उसमें, एंड दे मेक ऑल दिस ड्रामेटाइजेशन फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड। तो उसमें उनका आपस में झगड़ा होता है, कभी कभी वाइफ को थप्पड़ मार देती है, फिर उसको सॉरी बोलती है, फिर उसमें से एक सीख मिलती है। उसके पेरेंट्स इन लॉज आर आल्सो इन्वॉल्व, उनको भी कभी कभी लेते हैं अंदर, उनका आपस में कलेश होता है। बहुत, यानी इफ यू हैड टू डिफाइन क्रिंज इन द डिक्शनरी नो यू कुड पुट दिस वीडियोस देयर। अरे ये कितना cringe है, देयर इज अनदर चैनल कॉल्ड सितारा यासीन, तो उसमें शी इज अ गर्ल, ठीक है, मैरिड टू अ गाय। तो उसमें फिर क्या हुआ, वो बंदा किसी और से शादी किया, तो उसका भी शेयर
मेक अ ब्लॉग कि सेकंड वाइफ घर आ गई, अभी मुझे और स्ट्रांग बनना है। अच्छा, सेकंड वाइफ घर आ गई जब वाइल शी स्टिल देयर। या तो फिर हुआ ना फिर पॉलीगैमी, फिर क्यों अपन इतना कंप्लेंट कर रहे, करो भेजो तुम लोग। तो देन ये जो अभी मैंने जो शेयर किया था ना, वो किसी ने मुझे टैग देख किया ले था देख ले, कि ये और एक क्रेजी वीडियो है, उसका टाइटल है कि हस्बैंड की शादी पे मैं कैसे रेडी हुई थी, बारात वाले दिन का ब्लॉग। ओह गॉड, सुहागरात व्लॉग नहीं है ये। आई शेयर्ड दिस जस्ट लास्ट वीक, समवन टैग्ड मी इन इट कि कोई इन्फ्लुएंसर है, उसने अपने बाप के श्राद्ध का व्लॉग बना दिया है। क्या बात है? Yeah, how did you miss this? It's still there on my YouTube का stories देखना. And then Mehta told me that this girl was there on the show that he was on. So she's like a proper influencer. Proper यानी क्या, popular है followers थोड़ा बहुत. हाँ, तो उसमें समझे, देखिए दोस्तों, आज मेरे डैडी का श्राद्ध है, तो आज हम सिर्फ एक बार खाना खा सकते हैं, तो मैंने ये ब्रेकफास्ट के लिए मंगाया, फिर मैंने ये आइस टी पिया, ऐसे सब हो रहा है। यानी ये जो तो मतलब सब दिखा था ना एनिमे कल्चर जापान में, वो इधर आ ही गया ना, ये लोग भी वैसा ही तो है, but at least it looks like it. They're just robots, weird robots. ऐसा सब भी रिएक्ट करना पड़ेगा एक बार ऐसा। Oh shit, cringe reacts. या क्रीन रिएक्ट तो uh, बनता है, एक तो बनता है। क्या क्रेज या क्रीन रिएक्ट विद कौतुक, ऐसा एक बनता तो है कौतुक के क्रिंज बाद। रिएक्ट, हाँ, और वही वाला। हाँ हाँ एक। ओके, अभी बहुत आधा घंटा मैक्स बचा है, लेट्स गो टू द Q&A. Guys, if you're still with us, thank you very much for joining in and staying till the end. I hope this was entertaining for you guys, or if not, at least engaging, as they say. And the frequent flyers know the drill. For the new people, this is the part of the stream where we take questions, suggestions, or just anything that you felt like sharing with us. You can shoot in the comments, and we'll try to give you our best response to it. बताओ है कुछ? If you had पब्लिक asked earlier, also if you had asked earlier and if you missed it, you can copy paste it again. That's also fine. पब्लिक बोल रहा है क्रीन रिएक्ट करो गोपाल भैया के साथ। आइडिया तो मस्त है। क्रेजी हो जाएगा। हाँ, And someone is asking your thoughts on UG Krishnamurti's philosophy. अरे लाइक अरे करते अरे पूछ। अरे हार्डकोर लोग बेचारा इतना मीम दिखा जस्ट टू आस्क मी दैट क्वेश्चन. So, in fact, I'm reading one more book on him. There are very few books on him right now, and the book I'm reading currently is called The Biology of Enlightenment. So the thing is that UG doesn't have a philosophy of his own, right? It is a lack of any philosophy, which is what he went by, or not even went by. Like the way he would put it is that this is the only way I can live my life, having gone through whatever changes he went through, some very well documented physical changes. So he says that all of philosophy is just you trying to split hair. Baki, in the natural scheme of things, nothing really matters. All of it is your creation, including compassion, love, justice. Because the body knows how to operate in complete sync with the environment. बाकी सब आपका ऊपर का ड्रामा है. So that in a nutshell. But then he also keeps cautioning people that I can say this because I've gone through a very physical, biological, real change. If you have not, then you cannot do what I am doing. There's no point coming to me. I have nothing to offer. And please don't ask me how to do it because even I don't know how it happened to me. Maybe it was random. तो लोग बोलते कि नहीं, but then you were also following philosophy in the beginning and you've been a teacher yourself and maybe that path of seeking led to this. तो by the end he started saying कि नहीं, वो भी नहीं है. It's not even that I sought for. In fact, I think that me trying to seek further took me away from enlightenment. Although he never uses that word, he uses the word natural state. So it's very mind bending in a way to read about him because he never wrote anything himself ever. He didn't want to leave anything behind because he's like he said I'm not useful to society. Like someone like me, I'm living a peaceful life myself, but even the word peace I use because I want to communicate to you. For me, it's not even peace, it's nothing. So
uh, I think it's an important read nonetheless, because it also puts in perspective a lot of earlier work in philosophy and in spirituality. So people who lived with him, who were friends with him for the longest time, would say that no, there were changes in his body which exactly looked like the images you see of the saints. No, like he had these, all the chakras were activated and like they're properly pronounced shapes, exactly where the chakras tend to be. Including the, ये तो आपको पता ही है ना, सब लोग इधर बैठा है, सब लोग एक्सपर्ट केमिस्ट्स एंड जो रोगन पॉडकास्टर्स, तो is that way is very interesting to connect the dots with what you've seen with other historical personalities, including like Buddha himself. So I would suggest, if for other people, this is also there on my list of books that I keep sharing on Instagram. But if you have to read UG, I think you should read JD first. Otherwise, this will not make sense. So, and JD Krishnamurti, a lot of books are all very beautifully written, very poetic. Um, but if you have to read one, then there's a book called Freedom from the Known. That sort of covers the highlights of his teachings. And then maybe you can go on to UG. So on UG, there are only a few books. Two or three written by this guy called Mukunda Rao, who had access to him. And basically, it is a collection of his Q&As, not very unlike our Q&As right now. And uska compilation hai. And Mahesh Bhatt has written a couple of books because he was friends with UG till the end. In fact, he took care of him towards the end when he was not keeping well, and he finally passed away. So look it up. But first thing to read is JD, I think. Then you should go on to UG. So though book that I have written, read, is one is what I'm reading right now called Biology of Enlightenment, Mukunda Rao, and the earlier one was The Mystique of Enlightenment, also by Mukunda Rao. And it's very interesting. His perspective is a lay person's perspective. He begins the book by saying that my young daughter died in an accident tragically in Bangalore, and I was completely disillusioned with life. And I thought maybe going to this guy will give me answers. And every time I went, he would keep saying that there are no answers. And in fact, he was almost downright rude in a sense to people who are asking him the usual questions about life, philosophy, meaning, spirituality, religion, blah, blah, blah. And yet he found something comforting about UG because he was being so brutally honest that if nothing, you had to appreciate the man's honesty. And then sometimes that's all you need. So we also see the author's journey from his bereavement to arriving at some sort of solace in his life. So that way is also a very nicely written book. That book is called The Mystique of Enlightenment. I hope that will be helpful, and I think you should read it anyway. All right, next question. Someone is asking this functional psychopath is asking, do you believe in chakras? Yeah. आई थिंक ये ऐसा बात है कि खुद एक्सपीरियंस नहीं किया तो कुछ बोल नहीं पाएगा, बाकी सब थियरी है. So what they say is that they are the ductless glands of the body. So pituitary gland, for example. So it's not like they are completely imaginary. Those glands do exist in the body. And basically it says that when you reach that level, or let's say state, because level implies that there's higher and this is lower. You reach that state of being, that your personality is gone, your ego has died, ego death. And ego death is explained in medical science also, because it happens to some people, extreme cases of mental illness, or sometimes brain tumors, it can happen. So what happens is your sense of self completely dies. So you are alive, you are conscious, you are aware, but you're not yourself. Imagine like everything you do is through your personality, which is TSTCSR Ramesh, but that is also personality, and he wants to go to Manali. So after this, you don't want to go to Manali. Anywhere is the same place. So then people say, okay, Parfi, then how do you function in your life? So they say that the solar plexus takes over. So when required, like for example, if you have to cross the street, for that moment, the solar plexus takes over and your senses coordinate and you cross the road. Other than that, you're back to nothing, literally nothing. Like it's like he says that I could sit in a room
for hours till my life ends and I would not be bored, because even boredom is a construct of the personality. So it's that way is very um, I don't know the word for it. It's interesting for sure to read this, and I'm sure there's something to it, But unless you experience yourself, I wouldn't know. And also because we are all Western educated, especially someone like me who's been trained in the sciences, then I will. And I worked in healthcare also, so I will say कि मुझे double blind trial दिखाओ, फिर मैं बोलेगा no that to control trial दिखाओ, तो वो तो हो नहीं पाएगा ना इसमें. So you have to go by your own experience, but maybe you hold on to the very basic tenets of it, that if you live life in as natural a way as possible, without the intoxicants or the stimulants that take you away from the natural side of your being, then you will rise to a higher level of health, for lack of a better word. You know, um, most of what we do, behaviors, and even the food we eat, all of it is detrimental. It is only keeping you alive, that's it, but it's not adding anything to your well-being. Just think of all the food you eaten in the last 2 or 3 days. क्या आप खाया, आपने मैदा ही खाया होगा जहाँ भी गए हो क्या. So it's that, like, all your activities, the work you do, is it not stressful? Your relationships with people, are there not conflicts in that? So if you find ways of making all of this healthier, I'm sure it will reflect physically also. Whether it will be a chakra or not, I have no clue. But I can tell you by my own experience also that the more you sort out your life uh, at a personal level, and then also concurrently at the health level, the body responds. Now you feel different, you look different, your posture changes. No? I don't want to go all Jordan Peterson on you, but it does happen. And maybe the highest state of that is what you see in the accomplished people like the saints and the seers. But also very important to read UG is because you see how much effort the guy puts into debunking his own myths. He said that what is happening to me is nothing religious, not spiritual, not supernatural. It is all completely physical and natural, and it can happen to anybody. But why it happens, even I don't even know that. But don't worship it. So it was just so great of the man to do it. But then the thing is, was it even great? Because he did not have a personality left. So then this greatness or a claim to greatness also comes from a personality which was gone now. Such a no-brainer, and that's what Zen is about. It's a paradox, and yet somehow you practice it. So very enlightening that way. Not in the spiritual way, but just in an intellectual way. I think you guys should read it. All right, next question. Manish Sisodia, Manish Sunaya is asking. Manish Sisodia from Delhi. क्या बात है? नमस्ते सर. नमस्ते. क्या पूरा नाम क्या? सही नाम बोलो यार, ऐसा लोगों का नाम तो. Manish Sunaya is asking, like, कब से पूछ रहे कि when is No Country coming out on YouTube? Okay. So editing will begin in January, and 2 months max maybe फिर आ जाएगा. I'm still thinking about how to release it at once or no as a subscription or कैसा, क्योंकि 10 मिनट का वीडियो भी लोग देख नहीं रहे, तो 1 घंटे के ऊपर का लोग कैसे देखेंगे. तो रिलीज तो करना ही है. And I'm actually taking a break from touring for a while in Jan as far as possible. I can never really stop because my tour is called a never ending tour. But I'm cutting back majorly in Jan just to edit it because 2 घंटे का 2 शो में से edit करना, it'll take some time. But my personal deadline is Feb end. तब तक आ ही जाएगा. Shavik Bakshi is asking, 10 years down the line, you are more likely to become a god man or a politician. Which would you choose? He's saying I'm likely, or is what is the question? I didn't get it. मतलब उसने तो ऐसे ही फ्रेम किया कि you are more likely to become. Question नहीं है, but question mark डाला है. See, answer is simple. Harari puts it into very clear perspective. He says that for anybody who's wise, to
truth and power go on different paths. Up till a point, they are there together. But beyond that, you make a conscious decision. So anybody who's either successful or well known or both, they are wise people most of the time. Not always, obviously, you've seen exceptions. But people in power or people who are well known or respected, they're all wise people. But at some point in their life, the roads diverged and they chose power over truth and they became politicians. And the people who chose truth over power, they became philosophers or saints or artists. Very clear in my mind. तो वो नहीं कर पाएगा. बहुत लोग बोलता है अरे आप ऐसे लोगों को जाना मांगते हैं पॉलिटिक्स में ये वो और एटलीस्ट सम अदर सोशली एक्टिव रोल वो अपने से होगा नहीं बिकॉज टू ऑपरेट इन सोसाइटी इन दैट सॉर्ट ऑफ अ लेवल you will need to get your hands dirty जो अपने से नहीं होगा and you will have to lie to people. You think that any of the politicians are you cannot say the truth, no, it will just not work. And not only politics, even if you rise higher in power in corporate circles, you know the kind of people who rise up. It's all the psychopaths only rise to the top. Bigger companies, they rely on nothing but lies, no. They'll keep saying all the progressive mission statements, but they are the biggest polluters in the world. So is in my mind the path is clear. Like in fact, I say it myself in my video. Freedom over power. That's what it is. This my entire lifestyle is built around it. I think after 5-7 years in stand-up, I also could have gone down the same road like everybody else. Make content that is relatable, that is sellable, that is family friendly. Get the well-paying shows, not the private shows, the corporate shows. Go broader, get more people to come in. Do cleaner comedy, and sell products, make money. अपन नहीं किया ना अपन. The very conscious decision. Amount of money I've said no to in the last couple of years is staggering, but that itself is freedom. Saying no to money is one of the biggest freedoms you can ever have, and many people don't even come close to it because we've been brought up that way in a culture which is so competitive that saying no to money doesn't even cross your mind. Not as an artist also you ever think that you can say no to money. So पॉलिटिशियन तो अपन नहीं बनने वाला है. ऐसा बहुत स्टोरी होता है ना जैसे नायक के जैसा कि आदमी बन गया थ्रू सम सर्कमस्टेंस, तो अपने से होगा ही नहीं बिकॉज यू हैव टू गेट योर हैंड्स डर्टी. Anybody who is at any higher level of politics in any country, they have real actual blood on their hands. And if you can live with that, only then can you be in politics. Let maybe one or two, three questions, then we'll call it a night. Thank you, by the way, guys, for joining in. If you're still here and if you've not done it yet, please CFBR, do like the stream and share it with fellow seekers. So, Uday Bodela is asking, which audience group challenges you the most as a comic and pushes you as an artist? I never thought in terms of groups, but I think if a family comes in, it becomes very difficult because they are so awkward. One of the venue owners right here in Bangalore told me the observation. He says it's so fun looking at families in the audience, because they have so much to lose. It looks like that. The father is so edgy. On edge. तू जिसको पाल पोस के बड़ा किया है, तेरे को फिर भी डर लग रहा है कि कोई चुतिया कुछ बोल देगा स्टेज पे और मेरा रिस्पेक्ट कम हो जाएगा. That just shows you how precarious people's positions are in society. It's all imposed upon the hierarchies, the authority figures. So family is always very awkward. I guess if even I go with my family, which will never happen, the little family that I have left, it might be awkward, I guess, because so many things that you talk about with your friends are taboo, in family. तो when बहुत कम होता है अपना शो में से आता नहीं है, अगर आ गया तो फिर मुश्किल है, because I might still just be brazen and talk about what I want, but they are so uncomfortable that you can feel their discomfort on stage, और फिर क्या बाकी लोग सबको मजा आ रहा है, बट इनका इतना मुंह चढ़ा हुआ है ना कि that negative energy quite literally spreads in the room in a physical way. Let's not be spiritual about this bullshit. वो दिखता है क्योंकि वो आदमी को इतना तकलीफ हो रहा है कि it rubs off.
So that way, I think family crowd is the toughest for me. Younger crowds next maybe because no, they don't get the Altaf Raja references, but that is a much smaller problem to get over. At least young people compensate the ignorance with the energy. Families don't have neither. So that for me is a difficult audience segment. Thank you for the question. City Bird 29 is asking, Mm. what's the difference between TikTok dancer mom and Malaika Arora? uh, I mean, Malaika is good at what she does, the narrow range of activity that she does, obviously, but she's born in, I think isn't she born into a family who's already into Bollywood? I mean, she's married into one for sure, but uske pehle pata, I don't know what is her claim to fame. But often the difference is, see, there is a lot of random luck involved in this to address the question head on. So a lot of it is luck. No? We can never discount luck. And I said this before that in a godless universe, luck and randomness are the same thing, right? So it depends. No? If you believe in stones and planets, then you will say luck. If you don't, you will say random. So, but वो तो है ना, it is a circumstance. Often, I also feel that popularity is a coincidence where your personality matches the trending page of the market. That's all to it. Sometimes you can engineer it, sometimes, mostly you cannot change who you are. And you happen to be somebody who is sellable right now, unlike Guruji. So that is the answer. The good question, though. All right, last two questions maybe before we wrap it up. Gandalf is asking, Punit, why there's comedy scene in Hyderabad, but it's not as good. Very few audience members, rarely any new comics grow, and not enough reach. Do you have any tips slash suggestions to improve the scene? Not any what? मतलब not enough reach और comics के लिए कुछ Reach. space नहीं है grow Reach. करने के लिए. Hyderabad is one of the biggest cities in the country, but I feel that overall, uh, how big or good a comedy scene will be is directly proportional to the GDP of the city. उस उसका आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि comedy is a very cosmopolitan art form, and largely you see the audiences are the expats who work in corporate jobs, who come for that, or people who are exposed to a lot of content and media, especially Western media. ये लोग है ना अपना audience, तो वो कहाँ होता है? In the bigger the city, the more the chances of more audience being there, and also more people who are disillusioned slash encouraged enough to take it up. So because I traveled all the cities and the smaller towns, I see small town में कभी कभी एक दो बच्चा लोग होता है जो बहुत enthused है कॉमेडी के बारे में, वो लोग ओपन माइक कर रहे हैं, जो भी ट्राई कर रहे हैं. They will call people like me to come and do shows. After I do it, I'll get other comics to go. आप लोग भी जाओ औरंगाबाद, आप भी जाओ जयपुर या जो भी है. तो वो सीन कभी बनता नहीं. After we go, those few good shows again is down to zero because market ही आपको support नहीं कर. And it is clear to see, biggest market kya hai? Mumbai, Delhi, Bangalore, because they're bigger. Pune is a good market for shows, but not nearly as big as Mumbai. So Chandigarh, again, great example. The club has really put in a lot of effort and resources to making comedy happen there. But Chandigarh का population बहुत कम है. 16-18 लाख population है उसका. That's how many people I have in my Kandili neighborhood. So बनता नहीं है वहां पे सीन, पर उसने मेहनत करके थोड़ा बहुत सीन बनाया है, but it will never come even close to Delhi. But Delhi is too close. Any comic who is really serious about pursuing it will move to Delhi. Same problem Pune has. That no, whatever comic is serious will move to Mumbai. So similarly, Hyderabad is smaller than Bangalore or Mumbai, and hence you see that rubbing off on the footfall you see in shows. So beyond a point, आप कुछ इसका कर नहीं सकते. A few very enthusiastic individuals, producers, comics can try and build a few good rooms.
बट पूरा सीन चेंज होने के वो आपके हाथ में नहीं. इट इज टू मैक्रो अ थिंग in my reading, because we've done so many cities, no, for the first time and the last time as producers, and we noticed कि आप एक दो बार कर लोगे, people will come for the novelty of it, उसके बाद नहीं होगा, है ना. Because एक तो population कम है, and the churn of people is also very low. So Nashik as a city very popular because historically the city has been known for a lot of things, और अभी सुला वुला भी जो भी है वहाँ पे, but population बहुत कम है. I think इसका जैसे दिन चंडीगढ़ also, and it's a static population. No, nobody is going to Nashik for anything. Maybe college एक दो होगा तो ठीक है. But what happens in Mumbai, Delhi, is a lot of people keep coming and going out for jobs and as students and as tourists, even in Bangalore. So a lot of those people come for shows. And new people keep getting inducted into the work stream into colleges, and they come for the shows. And again, they leave, new people come. But nothing is happening in the smaller towns. So some of that is true for Hyderabad, although obviously much lesser extent than the cities I mentioned, because Hyderabad is proper metro city and it is growing. But if you just compare to Bangalore, it's simple. Just look at the population. That itself will tell you. So Mumbai is around 1.5 is the estimate. Delhi NCR is 2 crores. And I think Bangalore is also at 1.2. That's huge. I don't think Hyderabad is that big. Pune is around 60 to 80 lakhs. So that way Pune is 4 times that of Chandigarh, So these things, the macro things you cannot escape, And the sooner you accept it, the better. If you want to make a career in this or anything like that, you have to move to the big city. Chota share mein you can keep going as a hobby, but some people have found some comfort, like Bangalore में भी local scene इतना strong नहीं है, but corporate तो लोगों को मिल जाता है. Similarly, Hyderabad, there are 3 or 4 pro level comics who are from Hyderabad and they live in Hyderabad, and they are not very popular or no, not very visible in the scene, but उनको मिल जाता है corporate show, तो life चल रहा है, but that's not equal to there being a vibrant scene of comedy in that city. 10 बज गया है, so that's my time to go for my show. Maybe we can take one last question. Jamie, बताइए क्या लेना है last? So Yogesh Suradkar is asking, is it even fair to compare Sadhguru with Osho? Only time will tell, in terms of longevity at least. But I don't think it's fair. अभी वो compare क्यों ही करना है ना? I think you take what you can from people. No, we are comparing, two gurus, like we'll compare like Muhammad Ali versus Mike Tyson. ऐसा थोड़ी हो I think wisdom should be looked at a little differently. ये Ronaldo Messi वाला बात नहीं है इसके अंदर. And I know a lot of people will get offended by me saying that because they'll put Osho on a much higher pedestal, which is fine. But then you see what happened when Osho also tried to practice what he was preaching. Practice में execution में हर आदमी मार खाता है. So that way, if you see Sadhguru on ground is not being, I mean, at least what he's claimed or what is his goal, he is doing something about it. Now you might claim fraud है, or save the rivers was a fraud, save soil is also a fraud. पर वो बंदा कर रहा है ग्राउंड पे एक्टिविटी जो उसका दिमाग में है. Right, wrong, legal, illegal, that time will tell. But if you just go by track record, तो सब गुरु लोग का एंड में तो कांड निकलता ही है. तो देखते हैं. The way I look at it is this. Of course, I have jokes on Satji, obviously, but I think if he's processing anything information and is giving it out in a form that is palatable for today's generation, you should take it. No? Earlier, I used to hate these Paulo Coelho type of motivational books, The Secret, but then I met people who swear by it because they were at a point in their life where it helped in whatever way. They could have been going through some shit, some crisis, and at that time, unfortunately, Chetan Bhagat helped them. At that time, Krishnamurti would have been too dense for them. So maybe this is a gateway drug to go on to higher things. And for that matter, Osho was an original thinker in a lot of ways, but most of what he said is what he had read in books. The guy, he never claimed to be sort of like spiritually blessed or chakra vakra का इतना वो कुछ बात नहीं किया. He was just a very wise person, and he had read every book available. उसने पूरा library literally पढ़ के चाट डाला था.
And then you see having a beautiful mind, he could connect the dots and was very poetic in what he said. But whatever is said came from some source. No, there is no original thought. You just keep building on each other's thoughts and you present it in your own way. I think the same is true for Osho also. No, उसने भाई ने बहुत पढ़ाई किया, and you know he has 3 volumes of books on Pythagoras का philosophy. We all know Pythagoras because we all went to state board school. But even I had no clue that Pythagoras, besides being a mathematician, was also a philosopher. तो भाई ने कहाँ तो पढ़ा था, इतना पढ़ा था that he could write not 1 but 3 books on Pythagoras. So he's just a very well-read man. And if you're that broadly read, then if someone like a Sadguru comes 3 decades after you and he also has read the same things, you will find similarities and you will might feel कि ये copy कर रहा है. I think largely वही कि गुरु है, दोनों का सफेद दाढ़ी है, तो you confuse the two. But I think anybody who's read widely enough will come to fewer conclusions which are similar, because the truth is the same. No? Diversions and dance videos are different. Truth is the same. So I come to a place where I'm more forgiving of these things, and I'm like, ठीक है, टैकी है, क्रिंजी है, जो भी है, but अगर पब्लिक को सदगुरु देख के थोड़ा लग रहा है ठीक ठाक, तो fine. At least it's not as harmful content as the cringe ones that we were talking about earlier. I look at it that way. Of course, some of the stuff he says is very wacky, but then you should take what you can get and you should leave the rest out. Because this high standards we're setting for ourselves, I will only follow and like a person if I agree with everything he says. Then you will be left with nobody, not even yourself, because even you are not that consistent in your own life. So that is my take. If I had to pick one, whom to read, of course Osho, always Osho, every day Osho. But in a general sense, that is my view. That you should take what is easier for you to follow. All right, I think that's a good note to end on. Kya bolta hai, Jimmy? Yes. All right, great. Thank you everyone for joining in. For people whose questions we could not take, maybe we'll do it next time. Do hold on to them. We plan to do this more regularly, and we have been doing it, as you've been seeing. But we need some encouragement as well. So if you haven't so far liked the stream, CFBR in the comments after the live chat is done. Can you do that, please? Yes. Last time भी काफी लोगों ने किया था. Thank you very much for that. And share the stream or a part of it that you think people will like or relate to. You do know that on the laptop, when you use the share button, you can also share from a particular point onwards. So if that is the case, you can do that. Otherwise, we'll see you guys next year now with another live stream, क्योंकि हमारे पास material बहुत है, as you clearly see from the volts of our memes collection. Or we'll do a theme session with Kautuk for sure. And like I said earlier, just to repeat, the last few shows I'm doing this year are Bangalore this weekend, starting from tomorrow, day after, and Sunday. Also Sunday, last Zoom show of the year, No Country for Moderation. ये सबका लिंक डाल दिया ना जेबी इसमें, डिस्क्रिप्शन में है. डिस्क्रिप्शन में लिंक है सब शोज का. और आगे जैन में फिलहाल तो शोज नहीं है, एक शो है, द फर्स्ट शो ऑफ नेक्स्ट ईयर. Might be the last, you never know, but that's how I deal with my shows. But first show is Ahmedabad, Sunday, 8:30 p.m. Natrang Studio. I'll be doing one night only, one show only, gainfully employed in Ahmedabad. So if you're close by or if you're in that city, if you have people you know there, do tell them about that. All of it in the same one link that we are sharing. Do look it up, and I hope to see you guys again on this new channel. Do subscribe to it if you haven't already. Thank you very much, and also do thank our very own Desi Jamie for doing this for us and pushing me to do the live streams, because I have a lot of other shit to do, and I wouldn't be here if he wasn't pushing me. So do thank him as well. Reddit पे भी कुछ कुछ चुतियाप चल रहा है. I am too old to follow, but if you drift that way, then do participate in that. Thank you. Good night. Be kind, guys. I'll see you again very soon. Have a good New Year's and keep reading. Bye bye. Good night. एक सेकेंड.
also hydrate